معروف نام وقار علی خان پیش کرتے ہیں پروگرام پاکستان سے آگے. دنیا بھر میں آباد پاکستان کے بارے میں بھرپور رپورٹ، سماجی، فلاحی، اسلامی، سیاسی، سائنس، صحت اور JFK کے ساتھ پراپرٹی پر خصوصی رپورٹ. دیکھیے پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ دنیا بھر میں آباد پاکستانی پاکستان کی ترقی کے لیے سرگرم. دیکھیے پروگرام پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ امریکہ، یورپ، افریقہ، مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا کی ترقی میں پاکستانیوں کا حصہ. دیکھیے پروگرام پاکستان سے آگے. دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا فلاحی، سماجی، سیاسی، معاشی، تجارتی سطح پر پاکستانیوں کا حصہ. وقار علی خان کے ساتھ پروگرام پاکستان سے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام پاکستان سے آگے کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں TV1. ناظرین، جیسے جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی ایک کوششیں جاری و ساری ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اور احسن طریقے سے بیرون ممالک میں جو آباد پاکستانی ہیں ان کو سرمایہ کاری پہ جو ہے توجہ مرکوز کرائی جائے کہ پاکستان از اے امپورٹنٹ اینڈ پوٹینشیل ہب فار انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ ناؤ ڈیز ایز پاکستان اسٹاک ایکسچینج دا سیکنڈ بگیسٹ اسٹاک ایکسچینج ان دا ورلڈ. تو یہ بڑی خوش آئند خبریں ہیں جو آ رہی ہیں پاکستان سے، اور پاکستان میں سرمایہ کاری کی جو چانسز ہیں وہ برائٹ ہیں. ناظرین، عمران خان صاحب کا یہ اقدام بہت ہی امید افزا ہے اور بہت احسن اقدام کیا ہے حکومت پاکستان نے، جس میں عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ اب اوورسیز پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھے بیٹھے. یہاں پہ ڈائریکٹلی ان کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑے گی، صرف جانا ہے، فارم فل کرنا ہے، اپنا لیگل اسٹیٹس ڈالنا ہے اور پاکستان میں اکاؤنٹ کھول لینا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ بلینس آف روپیز اور ڈالر جو ہے پاکستان پہنچیں گے قانونی طریقے سے. اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سارے بینک جو ہیں فارن انویسٹرز کو میچنگ فنڈ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. OPTV گلوبل جو آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن سب سے بڑا چینل ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، اور ان کا ایک ایڈوکیٹ بھی ہے. اس بار OPTV گلوبل کے ایک پروگرام ہے ری برانڈ پاکستان نے ایک ویبنار لانچ کیا جس میں امریکہ کی ممتاز کمپنیز کو دعوت دی گئی، جس میں کمپنیوں کے CEO CTO نے بڑی تعداد میں حصہ لیا. اور یہ ویبنار نہایت ہی پازیٹیو اور نہایت ہی کامیاب ترین رہا. مجھے امید تھی کہ جن لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اپنا وقت دیں گے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس میں تمام تر ٹاپ CEOs 500 فارچون کمپنی کے بھی CEOs تھے اس کے اندر جنہوں نے حصہ لیا، جس میں ٹیکنالوجی بھی تھی، ٹریڈ بھی تھا، انویسٹمنٹ بھی تھی، بینکنگ بھی تھی، اور ہیلتھ کیئر کے لوگ بھی تھے. تمام شعبوں سے متعلق لوگ اس ویبنار میں موجود تھے جنہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان میں بزنس کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بزنس کریں. اس میں ڈیفینیٹلی بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں نے حصہ لیا جن کی تفصیل آنے والے پروگرام میں شامل ہے. تھوڑا میں تجسس رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی ویٹ کریں کہ ہو CEO اس ان ویبنار. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جتنے بھی ویبنار ہوئے ہیں اور ان میں یہ سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ ویبنار تھا جس کو دنیا بھر میں بہت پسند کیا گیا. اور اس میں لیڈ کیا ہمیں جناب قونصل جنرل پاکستان عبدالجبار میمن صاحب نے، اور اس موقع پہ وہاں پہ کمرشل اٹیچی جناب عاطف عزیز صاحب بھی موجود تھے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں لوگوں نے بہت ہی پیار سے، محبت سے اور دل جوئی سے حصہ لیا. جو سب سے اہم ترین چیز تھی
اس ویبینار کی اس میں جے ایس بینک کے جناب کامران ناصر صاحب تھے. انہوں نے بہت ہی اچھا انپٹ دیا اور ہی ریئلی اوپن دا آئیز آف دی فارن انویسٹر کہ پاکستان ایکچولی جا کہاں رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ باتیں جو ہیں اور یہ پازیٹیو چیزیں جو ہیں کوئی بھی ٹی وی چینل کبھی بھی عوام کو بتاتا نہیں ہے کہ پاکستان کی پروگریس کہاں جا رہی ہے اور کون کون لوگ جو ہیں پاکستان میں دلچسپی لے رہے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ او پی ٹی وی گلوبل جو اوورسیز پاکستانی ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے جس کا میں سی او بھی ہوں اور پروڈیوسر بھی ہوں, اس نے یہ پروگرام جو ہے آرگنائز کیا اور جو کامیابی سے ہمکنار ہوا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام دیکھ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے, اپنے کامنٹس بھی دیں گے. آئیے چلتے ہیں اس پروگرام میں, لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں اس پروگرام کی ہائی لائٹ کہ ہو از ہو. تو اس میں ہم رول کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہو از ہو ان دس پروگرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے. ساری نعمتیں, ساری راحتیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہیں, اور ہمیں یہ بڑی خوشی ہے کہ آج ماشاءاللہ پاکستان کے نامور اور بہت ہی ہائیلی اچیوڈ پیپل جو ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ پاکستان کی فلاح و بقا کی سوچتے ہیں امریکہ میں رہتے ہوئے. اور مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ جب ہم اس لینڈ آف اپرچونٹی میں آئے تھے تو ہمارے پاس گرین پاسپورٹ تھا, اور اسی پاسپورٹ پہ ہم اس ملک میں داخل ہوئے اور ہم نے ترقی کے مینار تعمیر کیے, تعلیم حاصل کی, چھوٹے موٹے کام کیے, لیکن اپنی منزل مقصود کو پا لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے بڑا تاریخ کا حامل ہے اور ہم اس کو ضائع نہیں جانے دیں گے, اور اس سے آج مستفید ہوں گے ہم. اور آج ہمارے درمیان ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب ترین لوگ موجود ہیں. آج اس بیٹھک کا مقصد اور اس میٹنگ کا مقصد جو ہے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ خود جا کے انویسٹمنٹ کر دیں پاکستان میں یا انویسٹمنٹ کر دیں, ایسی بات نہیں ہے. ہمیں آپ لوگوں کی ایکسپرٹ ایڈوائس کی ضرورت ہے. ایکسپرٹ ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ اپنے شعبے میں ترقی کی ہے, جو آپ نے اپنے شعبے میں کامرانی اور کامیابی حاصل کی ہے, اس کی لائف میں پاکستان کو آپ کیا ایڈوائس دے سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کی فیملی ہے, بچے ہیں, بزنس ہے, یہاں پہ یو آل سیٹ ہیئر, بٹ کہتے ہیں دور رہ کے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. آج کل آن لائن کا زمانہ ہے, زوم آ گیا ہے, ہم سب لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں آج اپنے معزز مہمان جناب عبدالجبار میمن صاحب کو انوائٹ کروں اور وہ ہائی لائٹ دیں ہمیں کہ انڈر دی لیڈرشپ آف مسٹر عمران خان ان دا ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ میں کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں, کتنے فری زون بنے, if there is any one window operation, health میں, کنسٹرکشن میں, بزنس میں کیا کیا فیسلٹیز میں موجود ہیں. تو پہلے لیتے ہیں رول کال. میں آغاز کروں گا جناب ڈاکٹر سہیل مسعود صاحب سے کہ وہ اپنا تعارف کرائیں بریفلی. السلام علیکم وقار بھائی. السلام علیکم کاؤنسلر صاحب. سہیل مسعود نام ہے میرا. میں سی ای او ہوں کابا فیوژن کا, لیڈنگ ہوم انفیوژن کمپنی ہے امریکہ میں. ہمارے 400 ملین سے اوپر کے ریونیو ہے ماشاءاللہ, اور ہمارے اباؤٹ 28 فارمیسیز ہیں نیشن وائڈ. یہ میری تھرڈ کمپنی ہے. کریسن میری فرسٹ تھی, پھر میں نے ایک پمپ کمپنی بنائی, اور پھر یہ کابا فیوژن ہے. تو ہم گھر میں مریضوں کو نرسنگ اینڈ انٹروینس میڈیکیشنز پرووائڈ کرتے ہیں. ہماری خود نرسز جاتی ہیں اور ہماری فارمیسیز جو ہیں وہ دوائیاں ڈسپینس کرتی ہیں. میں رہتا ویسٹرن میساچوسیٹ میں ہوں. تھینک یو سہیل صاحب. یو آر, آپ جو ہے یو آر فرام ایکچولی بلانگ ٹو اس لاس اینجلس. You left us, no problem, but your headquarters is still here. Now I'm going to be called Mr. Hafiz Khan Saab is from Dallas all the way. He's a very, very brilliant guy, and he runs one of the second largest energy drink in United States of America. Hafiz Saab, you are on. Thank you, Khan Saab, for having me, and thank you so much all the participants. They are here today. My name is Hafiz Khan, and I'm running an energy drink company.
I started in 2008, and now I'm become the second largest producer in the country. And I'm blessed with a lot of great things, and I can't say anything more than that. Now I'm going to be roll call to Mr. Sey Agey from Ottawa, Canada. Ji, Assalamu alaikum. My name is Syed Ahmed Ali, and I am the chairman for I Am Pakistan Worldwide Movement. We are trying to build the dams in Pakistan as well as the invest in Pakistan. Doing for last 30 years, alhamdulillah, and thank you so much for having me. Thank you very much, Mr. Sey Saab. Sey Saab is a long time my friend. 30 years, he's doing a lot of things for Pakistan. He created a lot of videos. Now he's working for the Pakistan Dam, and he's doing pretty good. Okay, now I'm going to be call Mr. Sana Khan is chairman and CEO of the Expert MRI. He's a MD, PhD, and philanthropist in Los Angeles. Dr. Sana Khan. Assalamu alaikum, everyone. So just quick background, pretty much grew up in Orange County in California. Did my undergraduate medical school at UCLA. So my medical degree is in radiology, training is radiology. My PhD is in neurophysiology. And I have another PhD in clinical anatomy. So pretty much a certified nerd. This is actually my third company also, Sey Agey, believe it or not. Good job, good job. So I think Sey Agey and I are both in building companies and selling them off, kind of a business, I suppose, right? So I'm more in medical entrepreneurship. So I still do a lot of research. I'm actually the first radiologist in the country with the technology during MRI. Alhamdulillah, so I have 25 locations here in California that I own. And then I have another business in Texas that I'm a partner in called Altus Healthcare, which I was one of the Thank you. So, alhamdulillah, all is well, and look forward to hearing everybody else's story. Thank you very much. Now I'm going to be calling very important and our new friend, Mr. Tariq Fadi Saab. He is in a business of edible arrangement. He has about $600 million company, and he has about 1,000 franchise. This is Tariq Fadi from Atlanta, Georgia. Thank you, Abakar Saab. It's really nice to join all of you here. I saw the list of the people that were going to be joining, so I figured I will come and listen, especially since I just heard from Sana that he sold many companies and built many companies, so we have a great talent that we can learn from. The founder and CEO of Edible Arrangements founded it in 1999. We're a franchise company, probably not as important as diagnostics and medical, and no PhDs or anything. So alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has been very merciful. We've done well. So I'm here to kind of listen to this great group that Bakar has been able to put together, and look forward to learning and seeing how we can participate. Thank you for having me. Now I'm going to be rolling with my dear friend, Mr. Ashraf Lakhani from out of Chicago. He is in a courtesy business. It's called Hotel Industries. He owns almost 19 well-branded hotels. I've been in one hotel, one of the largest, and he's a great experience, and he's going to be really an asset for our country to bring more brand in Pakistan. Mr. Ashraf Lakhani, you are on. Assalamu alaikum, everybody. Thank you for the introduction, sir. I started my career in 1970 in the United States. I've been here 50 years, mashallah. And alhamdulillah, I've been blessed and growing my portfolio from 1 hotel to 20 hotels now. And I'm, inshallah, looking forward to participate in a very active role, trying to take this organization to the next level and hopefully help the economy of Pakistan, especially in travel and tourism. Majority of our portfolio is Hiltons and Marriott, and I'll be more than happy to answer any questions. My background is engineer. Then I did my MBA from Tech School of Business, Dartmouth College. And sometimes I try to use my financial know-how and models, but in this economy, between the disconnect in the stock market and the economy, it's very difficult to forecast and value the company, but inshallah, we'll make it a go. Thank you very much, Mr. Ashraf Lakhani Saab, my dear friend. And now I'd like to roll in with Mr. Naim Siddiqui. He is from NAD College, which is a very renowned college, acceptable all over the world. Naim Siddiqui recently discovered his company is in switch panels.
He built about a 30 to 40 feet long switch panel, which is managed all the electric distribution breakers, and it's very high technical company. I'm really proud of him. He built about this over $100 million company, 300 people working with him, and engineers in Canada, Houston, and Dallas, and Los Angeles. Mr. Naeem Saab, you are on. Okay, Assalamu alaikum everyone. Thank you for having me. मेरा नाम नईम सिद्दीकी है. I live in Chino Hills, California. I have a business that supports the utility power industry, and we design, engineer, manufacture, test, and finally ship what are called control buildings. Inside the control buildings are medium voltage metal clad switchgear and some other things like protective relay panels. We have 3 facilities, one in, of course, Fontana, where we started in 1996, one in Dallas, and the third one is in Toronto, Canada. We have about sales of $80 to $100 million at the present time. Notwithstanding the COVID, we're still holding our own. I think the business is still relatively strong. So thank you again for having me. Thank you very much. And I would like to invite Mr. Nasir Javed. He's from LA. He's in technology, chips, and semiconductor business. Mr. Nasir, you are on. Thank you very much, Vakar, for having me. Definitely, it's a great panel. I'm based in Orange County, California. I started my company, which builds storage devices, memory, and solid-state drives for computers and robots. We have sold our product around the world in 57 countries. And we are typically, when we talk of IT, at least in the context of Pakistan, we always think of software, but I am one of the few hardware companies, and my background is in computer hardware design and volume manufacturing. Again, thank you for having me, and look forward to working with you and everybody else to support and help Pakistan. Kamran Nasir Saab, if you are available, could you just speak a little bit about yourself, please? Thank you so much, and it's an absolute honor to be part of this, wonderful gathering. Albeit it is taking place electronically, but my apologies first of all, because I had a different time that was in my mind, or rather, I would say, communicated. So you see me, in a casual dress. Nonetheless, as a background, I am a chartered accountant by profession, and I am managing the largest investment bank in Pakistan. The highlight of the investment bank is that we deal predominantly with the likes of JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS, Goldman Sachs in Pakistan. And as a regular religious feature, I conduct a lot of road shows and conferences abroad. And Jamal Saab is aware of this fact that we have been continuously coming to US with a delegation of roughly around 20 odd people representing 20 powerhouses in terms of businesses from Pakistan to US for the last consecutive 4 years. And we have been hosted by the State Department of US. And the companies that have been accompanying are the largest groups, which were accompanied by their chief executives and sponsors, the likes of Engro in Pakistan, HBL, UBL, MCB, the entire Fauji group, the Fauji Fertilizer Company, then the PSOs, OGDCs, the largest oil companies in Pakistan. And we have also been accompanied by the government functionaries, such as the last time Governor Sindh was leading the delegation alongside us. And we had, representation from the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the central bank. And the idea was always to improve the business ties between the two countries, which means that we were talking of to and fro investment between each other. So collectively, the import and exports as it stands today between US and Pakistan is at $6 billion, whereas the assessment, since we run the largest research house in Pakistan and we provide research to global big bulge bracket firms, so we see the potential to go to $15 billion easily. And what we also do is that once we are done with Washington to engage on a policy level to improve the business environment,
Then we move on to New York and Boston, where we conduct one-on-one meetings with the largest fund managers, the likes of Wellington's, Wells Fargo, JP Morgan, and many others, funds such as the Capital Group, which is the largest asset manager in the world, and they have roughly $1.8 trillion under management and is based out of US. Now, I would like Mr. Khalid Raza to just give a brief background of yourself, sir, please. This is Khalid Raza. As mentioned, I created a company a software company, which Cisco bought for $610 million. The company inside of Cisco our product has a revenue over $400 million. And as of last month, I left Cisco again to start another company. So I'm in process of closing my funding and start the next venture. Now I would like to call Mr. Amir. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Mr. Wakar, for inviting me on this group. I've met a few of you guys, and it's just been a while. And I'm just I'm not that big of an entrepreneur like you guys are. I'm just a pain doctor, pain physician from Arkansas. And I have few centers in Arkansas, which I run at a surgery center. So my expertise is interventional pain, spine problems, back and neck problems. So I'm just good at creating a small model of clinics and surgery centers. So I'm not as big as Sanabai, that's done several companies, but inshallah, want to learn from him and learn from you guys, and let's participate in some venture that can work for Pakistan, inshallah. Thank you, Amir bhai. That's the idea that, some of us are very experienced, some of us are new, but this team is going to help everybody to be as good as, so we can sell $600, $800 million companies to big companies. So at this time, I would like to invite Mr. Mubashir, if you could just speak a little bit about yourself. So yeah, just to introduce, I'm on the board of Open Silicon Valley, which is an organization for entrepreneurs in North America over here. We have about a community of 5,000 professionals that we work with. A lot of people are interested in always invest in Pakistan also. Many, they work over here for their own startups and things like that. As a background, I was in HP, started in HP Labs in technology, and then in supply chain for 20 years. And the last 10 years, I've been in Google, and I'm a group manager over there in the semiconductor area. Assalamu alaikum, Wakar bhai. Thank you very much for giving me a time and joining this amazing group. Key expert working with a government project, especially फौजियों के projects आप बड़ी काम करते हैं फौजियों के साथ. Go ahead. Yeah. Actually, I established my company in 2009 with the name of TSI Engineering. And alhamdulillah, right now I have like a net worth. I'm not too big, but around $40 million is my net worth and the surety. And recently, actually, last month we started our office in Faisalabad. And I hired 4 engineers in the beginning. Right now, they are working well. My idea is at this moment just to give all my office work over there to the engineers, like all the submittal, all the construction work. We are actually expert in design build, and all the design work, definitely it will go to the Pakistan. And also for the UET Lahore Umar Hall as alumni, we actually generated more than $300,000 for its rehabilitation. And last month it was its inauguration over there. And also, actually, from our own self, we have like more than 600 students up to elementary level to whom we are actually helping them a lot. And there are more, I think, right now we are starting a 4th filtration plant in Faisalabad, in Punjab village, from my own pocket. But anyhow, by looking forward to work in Pakistan. Thank you. Thank you. So, Alhamdulillah, thank you very much. All people are really bright people, bright and proud of Pakistan. I really salute you. आइए देखते हैं वेबिनार इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड पाकिस्तान एज द पोटेंशियल हब फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स.
मलाइका फरमाइए ये रिपोर्ट. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम. जैसा जानते हैं कि मैंने तादाद प्रोग्राम और इंटरव्यूज़ किए हैं साल से, और अब मैं ला रहा हूँ एक बुक, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी अमेरिकन इन अमेरिका. ये बुक जो है तकरीबन 500 पेज पे मुश्तमिल है, और इंशाअल्लाह दिसंबर में इसको मैं रिलीज़ कर रहा हूँ बुक को. अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी शख्सियत है आप चाहते हैं कि उसको इस बुक में शामिल किया जाए, तो प्लीज़ मुझसे रब्ता कायम करें. मेरा ईमेल लिख रहे हैं, मेरा फ़ोन नंबर लिख रहे हैं. प्लीज़ डोंट मिस माई बुक. इज़ कॉल्ड the most influential Pakistani American in US. Okay, the book is remarkable, very informative about those successful Pakistani American, those gone on the height of success. So please stay tuned with my book coming soon on December. Or if you know someone to be participate in this book or included in this book, please contact me on this number, और ये मेरा फ़ोन नंबर है. Now I'd like to really invite His Excellency Janab, the Consul General Abdul Jabbar Memon Saab, to address this group about what are the opportunities, what are the facilities, क्या मराद गवर्नमेंट देना चाहिए, किन एरिया में पाकिस्तान के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि ये these are the expert group, you know, they can advise government what to do in what area. So Abdul Jabbar Memon Saab, you are on board. थैंक यू वेरी मच वकार खान साहब और जमाल ख्वाजा और आपके जो जितने भी टीम के मेंबरान हैं पाकिस्तान में और यहाँ पे यूएसए में, मैं आपका रियली तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज आपने इस वेबिनार का सेमिनार का इंतज़ाम किया. और मुझे यहाँ 5 साल हुए, मैं आज कुछ उन लोगों से भी इन अ वे इंट्रोड्यूस हुआ हूँ जिनको मैं शायद पहले कभी न मिलता या पहले कभी नहीं मिला हूँ. आज बड़ी खुशी ये भी हो रही है कि डॉक्टर सोहेल मसूद साहब जो बहुत ही मसरूफ़ होते हैं और लोगों की तरह, आज वो यहाँ नज़र आ गए हैं. डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मसूद साहब, मुझे लग रहा है कि इस आज के वेबिनार के बाद इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे. अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह बड़े बहुत ही मोतबर स्पीकर्स हैं आज इसमें सेमिनार में. मेरा आइडिया तो था कि मैं कुछ ज़्यादा तफसील से, लेकिन मैं कट शॉर्ट करूंगा क्योंकि औरों को मौका देना है और मैं भी चाहूँगा कि उनकी सक्सेस स्टोरी सुनूं. ये वो पाकिस्तान के आइकॉन्स और हीरोज़ हैं जो यहाँ आए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पे, और फिर उन्होंने माशाल्लाह इतनी बड़ी ग्लोरी अचीव की. और इनमें से कई लोग जो हैं वो माशाल्लाह पाकिस्तान में भी इंगेज हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि इस किस्म के मीटिंग्स और वेबिनार्स के बाद ये और पाकिस्तान में जाएंगे. मेरा एज ए गवर्नमेंट फंक्शनरी काम यही है कि मैं हाईलाइट करूं अपने जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि कई दफ़ा बड़ा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन गैप रहता है और कई चीज़ा चीज़ें जो हमसे दूर हो जाती हैं. मैं अपने जो मेरा ये डिस्कोर्स है इसको आई विल ट्राई टू डिवाइड इनटू 3 सेशंस इन अ वे, 3 सेगमेंट्स. कि पहला मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा कि पाकिस्तान चंद साल पहले कहाँ था, और फिर मैं थोड़ा सा पाकिस्तान और यूएस के बायलैटरल ट्रेड पे जो एग्जिस्टिंग सीनरियो उस पर बात करूँगा. फिर आऊँगा कि ये जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, वो उन्होंने 2 साल में माशाल्लाह किस किस्म की फिनोमिनल चेंजेस ले आए हैं और किस किस्म का इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया है जो पाकिस्तान की तरफ अब लोगों ने जाना शुरू किया है.
तो इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का ये सब देने का मकसद ये है कि उसमें कंपैरिजन में आसानी हो जाती है। आपको पाकिस्तान जो जब 1979 में जब रशिया ने इन्वेजन की अफगानिस्तान में, तो उस 1979 से लेके अभी 2015 या 16 तक हम एक अनफॉर्चुनेट वॉर ऑफ टेरर और मिलिटेंसी के चैलेंज को हैंडल कर रहे थे। तो ऐसा वो मुल्क जिसमें यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन सुसाइड बॉम्ब होते रहे, जहाँ पे हमने कोई 70-75 हजार अपनी कौम की लाशें उठाई लोगों की, जहाँ पे हमारे 11 से 12 हजार फौजी शहीद हुए, जहाँ पे हमें $108 बिलियन के इंस्टेंट हमारी इकोनॉमी को लॉसेस हुए। ये वो जमीन थी जहाँ पे ये कोई 40 साल से ये इस किस्म का फिनोमिना एग्जिस्ट कर रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर, वो चाहे पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन हो, चाहे कोई और बाहर का इन्वेस्टर हो, वो कोई भी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता या जुर्रत नहीं कर सकता जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की इस किस्म की सीरियस सिचुएशन हो। मैं महातीर मोहम्मद को कोट करूंगा कि वो कहते हैं कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये दीज आर लाइक पिजन्स की तरह वो आते तो यानी कि 1 by 1 है, लेकिन जब चले जाते हैं तो ग्रुप में चले जाते हैं, और फिर जब आते हैं तो वही एक एक करके आते हैं। तो ये इस किस्म के बैकग्राउंड में पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट का सोचना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीजों के बाद ये हमारी कौम का रेजिलेंस है, ये पाकिस्तान की उन अफवाज जिन्होंने कुर्बानियां दी, शहादतें ली, और पाकिस्तान को आज इस अल्हम्दुलिल्लाह इस मिलिटेंसी और टेररिज्म से आजाद करा के एक नया जो है यानी कि मुल्क को एक ट्रैक पे ले आए, जहां पे अब पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज निकल पड़ी। ये था वो पर्सपेक्टिव जो बताना इसलिए जरूरी था कि ये पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के मुल्क और पाकिस्तान के अफवाज का वो रेजिलेंस है, वो हमारी कुव्वत मदाफियत थी कि जिसकी वजह से हम इतना बड़ा ट्रामा, मैं कहता हूं, मैं गारंटी देता हूं एज ए डिप्लोमेट, मैं कहता हूं कि इस किस्म की सिचुएशन में अगर दुनिया का कोई और मुल्क 40 साल के इस किस्म के ट्रामा में रहता तो आज उसकी दास्तान तक न होती दास्तानों में। लेकिन मैं सलाम करता हूं पाकिस्तान के अफवाज को, पाकिस्तान की उस कौम को, और ये एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, और पाकिस्तान इतने बड़े चैलेंज से अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल आया। अब मैं आ रहा हूं दूसरी तरफ ये है कि इन सारी सिचुएशंस के बाद हमारे पाकिस्तान और यूएस के बायलैटरल रिलेशंस में अपहीवल्स रहे हैं। That's the part in history of our bilateral relations. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड की साइड में हमें हमेशा हम बेटर साइड पे रहे, और बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा हमारी फेवर में रहा। अब मेरे एक इंट्रोड्यूस कराने वाले ने कोई $6 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड बताई है। मेरे पास जो डाटा है वो ये है कि जो हमारे यूएस सेंसस ब्यूरो ने दिया है, जिसमें $3.9 बिलियन की पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स किए गुज़िश्ता साल, और $2.6 बिलियन की इंपोर्ट्स हमने की है अमेरिका से, और ये कोई $6.5 बिलियन बनता है जो ये उनके ऑथेंटिक सोर्स से हमने लिया है। तो आप अंदाजा लगा लें कि जब हमने एक्सपोर्ट्स बहुत की, इंपोर्ट से ज्यादा की, आप लोग सारे समझते हैं, लेकिन मैं उन ऑडियंस के लिए जो फिर ये फेसबुक लाइव पे, कि जब एक्सपोर्ट्स हमारी ज्यादा हो, इंपोर्ट्स कम हो, तो इसको कहते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के फेवर में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस स्पीक्स ऑफ द पाकिस्तान से इंपॉर्टेंस एंड स्ट्रेंथ के इन हालात में भी हमने अपने जो ट्रेड बैलेंस है वो हमने पाकिस्तान की फेवर में रखा है, और इट स्पीक्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, bilateral commercial relations between Pakistan and USA, कि इन हालात में भी वो being a very important and major trade partner, हम ये benefit और ये dividend अल्हम्दुलिल्लाह enjoy कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को तो पता है, जो मेरे यहाँ पे पैनलिस्ट हैं ये सारे जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी अमेरिकन कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारी कोई अमेरिकन कोई 80 से ज्यादा मल्टीनेशनल्स भी हैं, उसमें सब्सिडियरीज भी हैं। वो आपने नाम लिया, कोका कोला, पेप्सी कोला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सॉन, प्रॉक्टर गैम्बल, हनीवेल, फाइजर, एबट, डुपॉन्ट, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, सो मैनी। अब जब इस किस्म की कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं तो इट मींस के पाकिस्तान में वो एनवायरनमेंट और वो अपॉर्चुनिटीज किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल हैं, वरना ये मल्टीनेशनल कंपनीज या ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती हैं जहां पे उनको वो एप्रोप्रिएट क्लाइमेट ना मिले। तो मैं ये कहता हूं कि ये बड़ी हार्टनिंग बात है कि इससे भी थोड़ा सा एक मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है कि वो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स जो आज यहाँ बैठे हुए, इन्वेस्टर्स बैठे हुए, और कई लोग हैं अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हाई अचीवर्स हैं, उन सबको ये हिम्मत पकड़नी चाहिए, क्योंकि वो ये उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन है।
जहां से अल्हम्दुलिल्लाह ये कई लोग आए, मुझे तो बड़ी यानी कि कामयाब स्टोरीज लोगों ने सुनाई कि हम कितने अमाउंट लेके वहां पाकिस्तान से आए थे यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो यहाँ पे ग्लोरी देखिए। तो अब ये इट्स टाइम टू रिटर्न टू योर ओन कंट्री, वो कंट्री ऑफ ओरिजिन जहाँ पे आप पैदा हुए, जहाँ पे आपने उस मुल्क में बड़े होके फिर यहाँ पे आए। तो आप इन ये मैसेज है कि इतनी बड़ी मल्टी नेशनल्स और इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल कंपनीज अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े यानी कि इन्वेस्टमेंट की पोजीशन में है, वो क्यों ना करें। उसके बाद पाकिस्तान की मार्केट के बारे में आपको पता ही है कि इतनी बड़ी 210-220 मिलियन की कंज्यूमर मार्केट हो, तो वहां पे जो है उससे बड़ा अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं और आपको बेधड़क होकर जाना चाहिए वहां पे। मैं कुछ थोड़े से इनिशिएटिव जो मैंने इस 5 साल में, अनफॉर्चुनेटली मेरा स्टे मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से थोड़ा ड्रैग हो गया है, वरना 3 साल के बाद तो हम चले जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में हमने यानी कि फर्स्ट एवर आईटी का जो फर्स्ट एवर जो समिट थी वो हमने सैन फ्रांसिस्को में ऑर्गेनाइज की, ओपन के कोलैबोरेशन के साथ, और हमारे एम्बेसडर साहब असद मजीद खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे, उनकी सुपरविजन में ये फर्स्ट एवर समिट थी जो हमने सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली में ऑर्गेनाइज की, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह 200 बड़ी आईटी की कंपनियों में ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कईयों में से उन्होंने अपनी बैक ऑफिसेस पाकिस्तान में खोली हैं, कॉल सेंटर्स खोले हैं, और आप वहां पे डिजाइन सेंटर्स खोले हैं। तो ये भी हमने शोकेसिंग की पाकिस्तान की। उसके बाद सब्सिक्वेंटली मैं स्टार्टअप्स की कॉन्फ्रेंस में भी मैं गया वहां पे सिलिकॉन वैली में, और माशाल्लाह पाकिस्तान के कई बच्चे, यंग बच्चे स्टार्टअप जो हैं वो अब सिलिकॉन वैली में से वेंचर कैपिटल्स के जरिए फंडिंग ले रहे हैं और पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट्स बना के उनको दे रहे हैं। तो ये सब मुमकिन है। ओपन का प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स की एक बड़ी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम किया, खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोगों को प्रोमोट भी कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो सबसे बड़ा ई कॉमर्स का जायंट है, कोविड-19 में ई कॉमर्स का बिजनेस बड़ा थ्राइव हुआ है, बड़ा फ्लॉरिश हुआ है। हमने अमेज़न से नेगोशिएट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जो उस नेगोशिएशन प्रोसेस से जब हम निकलेंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला अमेज़न पाकिस्तान में लॉन्च करेगा इंशाल्लाह ताला। उसके पायलट प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, अभी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, एक दिन इंशाल्लाह ताला वो फॉर्मली भी इंशाल्लाह ताला, अब जिस वक्त अमेज़न जैसी ऑर्गेनाइजेशन या चली जाएगी वहां पे ई कॉमर्स की इतनी बड़ी कंपनी, आप अंदाजा लगा लें कि उसके बाद दुनिया से किस किस्म की और कंपनियां आना चाहेंगी। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सियाचिल में हमने मीटिंग्स की, हमारे सफीर साहब ने इंटरेक्शंस की, मेरे ट्रेड सेक्शन ने उस पर काम किया, मेरी पूरी टीम ने काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन पे हैं कि वेरी सून इंशाल्लाह वी माइट बी हैविंग अ वेरी गुड न्यूज़ कि अमेज़न भी पाकिस्तान में इंशाल्लाह लॉन्च करेगा। कोविड-19 की वजह से बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान ने, जाहिर है जो कस्टमर्स थे, जो अमेरिकन कंपनीज के बिजनेस जब श्रिंक हुआ है तो जाहिर उन्होंने, लेकिन अल्लाह की तरफ से हर चीज में कंपनसेशन होती है, उसको भी हमने हमारे लोगों ने, हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने उसको भी बैलेंस आउट किया। वो चले गए पीपीईस में, मास्क बनाने में, और जो कोविड-19 में प्रोविजंस की जरूरत है उसको बनाने में, वेंटिलेटर्स हमने बना लिए हैं। तो ये सब वो हमारा जो एंथुसियाज्म और जो हमारी अर्ज, जो हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में जो एक एफर्ट और एंडेवर और अपने मुल्क के साथ पेट्रियोटिज्म और लॉयल्टी लिखी, वो हमें कहीं पे भी सेटबैक नहीं देती। टाइमली ट्रांजिटरी सेटबैक्स आते हैं, लेकिन अल्लाह वी वेरी सून ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रिजीम पे बात करूंगा कि पाकिस्तान में कि इन्वेस्टमेंट रिजीम, ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में क्या है, हर इन्वेस्टर क्या चाहता है, इन्वेस्टर क्या चाहता है जब वो पाकिस्तान में लैंड करे और फिर टेक ऑफ करने के दौरान वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि जी रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ बिजनेस, डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, वो उसको कम से कम हो कॉस्ट। फिर वो क्या चाहता है कि प्रोसेसेस बहुत कम हो, वो रिड्यूस कर दिए जाए, लोगों को ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स में न उलझाएं, उस रैंगल्स में न डालें। फिर ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस के हैं उसमें हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए हैं कि जो इन्वेस्टर आए वो एक ही छत के तले अपनी सेटअप करे और वहीं से अपनी प्रोडक्ट्स जनरेट करे, मैन्युफैक्चर करे और वहीं से अपनी एक्सपोर्ट्स करे। फिर हमने लिंकेज पैदा करने की कोशिश की है ट्रेड, इंडस्ट्रियल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज को फॉर ग्रेटर कन्वर्जेंस। ये वो चीजें जो इन 2 साल की टाइम में हो रही है। हमने सेक्टर्स अनाउंस किए हुए कि इस पे आप ज्यादा फोकस करें। ऑटो एंड ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें फूड एंड बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लॉजिस्टिक्स है, टेक्सटाइल्स है, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट्स है। ये हमने एरियाज भी पूरी दुनिया को इसकी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की है।
अब up to 100% foreign ownership is allowed. पहले ये नहीं होता था. अब there's no minimum requirement for the amount of foreign equity investment. Option to repatriate profits, dividends or any other funds to foreign investors currency of origin. ये पहले फैसिलिटीज नहीं होती थी, लोगों के पैसे रिपेट्रिएट करने में प्रॉब्लम होती थी, स्टक अप हो जाते, स्टेट बैंक की सैंक्शंस होती थी. अब अल्हम्दुलिल्लाह उन सारे से ऑल हैव बीन डन अवे विद. अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जाहिर है मैंने जैसे पर्सपेक्टिव बताने की जरूरत इसलिए थी कि कहां पे हम थे और कहां पे आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं. यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां वॉर अगेंस्ट टेररिज्म और मिलिटेंसी चल रही हो, वहां पे आप क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन लास्ट 2 साल में हमने 39 यानी कि पॉइंट्स इंप्रूव किया वर्ल्ड वाइड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में. और इंशाल्लाह ताला ये रैंकिंग हमारी और बेहतर होती जाएगी जैसे जैसे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा. अब ये है कि जो बिजनेस डूइंग में जो 2020 की जो पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट ने की है उसमें 6 मेजर रिफॉर्म्स हम लेके आए हैं. गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट ने 6 मेजर रिफॉर्म्स ले आई है. इसमें यह कि अब जो कंपनी है जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहले महीनों लग जाते थे रजिस्टर करने में, अब अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ इन 24 आवर्स. 1 डे में आप सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं और उनके साथ एसोसिएटेड जो 9 कंपनीज हैं उसको इस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है कि उसी एसईसीपी के पोर्टल से आप उन सारे 9 ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड एजेंसी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. तो इट मींस के ये इतना एक ही रूफ के नीचे एक ही पोर्टल के नीचे इन्वेस्टमेंट की कंपनी को रजिस्टर कराने के प्रोसेस को इंटीग्रेट किया गया है. उसके बाद ये कि कंस्ट्रक्शन परमिट्स हो, पहले महीनों सालों तक लोग बेचारे प्लान लगाने के लिए खड़े होते थे, कंस्ट्रक्शन की परमिट्स नहीं मिलती थी. अल्हम्दुलिल्लाह दैट हैज बीन रिड्यूस्ड नाउ टू इन डेज ओनली. कहीं पे 30 दिन है, कभी कहीं पे 90 डेज है, सालों से निकल के वो दिनों में आ गई है बात. कमर्शियल प्रॉपर्टी नाउ कैन बी रजिस्टर्ड in days which otherwise God forbid used to take months and in some cases in years. अब हम 20 से 30 दिन में लाहौर और कराची में अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी रजिस्टर करा सकते हैं. यूटिलिटी जो इलेक्ट्रिक कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी गैस और वाटर के कनेक्शन सालों तक अनअटेंडेड रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब महीनों में विद इन फ्यू मंथ्स में वो हल हो रहे हैं. ऑनलाइन पेमेंट के हमने टैक्स के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा दिया है और वो अब पेमेंट्स की जो नंबर थी जो तादाद थी अगर से के 34 हेड्स ऑफ यानी कि पहले 47 हेड्स ऑफ टैक्सेस थे अब उनको कम करके हमने 34 कर दिया. इंशाल्लाह इट विल बी फर्दर रिड्यूस विद द पैसेज ऑफ टाइम. वेबो के कस्टम की पोर्ट पे सॉफ्टवेयर हमने इंट्रोड्यूस करा दिए जो उसने बॉर्डर कंप्लायंस जो एक्सपोर्ट्स के लिए उसके टाइम को रिड्यूस कर दिया है. तो ये वो सारी वो चीजें हैं जो इस 2 साल के इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौरान हुई हैं और अभी इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ एनुअल पे है. जस्ट अ वीक बैक ये जो डिजिटल जो खुशहाली अकाउंट हमारा जो है ये इंट्रोड्यूस कराया, इनॉग्रेट किया रोशन डिजिटल पाकिस्तान के नाम से. 2 चीजें मैंने डेलिबरेटली छोड़ दी अपनी इस ओपनिंग रिमार्क्स को मुख्तसर करने के लिए, एक आईटी सेक्टर को और एक ये रोशन डिजिटल अकाउंट जो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा ग्रीवेंस था कि जी ये बैंक अकाउंट खुलवाना पाकिस्तान में हमारे लिए अजाब जिंदगी बन गया है. अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 हफ्ता पहले प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया और हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर से हमारी वेबिनार पे मीटिंग हुई और अब आप अपने घर पे लैपटॉप पे बैठ के अपना अकाउंट खोल सकते हैं. और 8 बैंक्स पाकिस्तान की जो है जिसमें फैसल बैंक, यूपीएल, हबीब बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और 8 बैंक ऑफ पंजाब, 8 बैंक्स में आप अपना अकाउंट खुलें. और सबसे बड़ी इसमें फैसिलिटी ये है कि जो डॉलर अकाउंट में खुले या रुपये अकाउंट में खुले, जो रिपेट्रिएशन ऑफ अमाउंट है विद इन फिजी यू कैन ट्रांसफर योर इवन $1 million फ्रॉम पाकिस्तान बैक टू योर बैंक अकाउंट इन वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस और बॉस्टन. ये एक मिरेकल है. मैं आपको बताऊं ये इस गवर्नमेंट का एक फिनोमिनल काम है जो पाकिस्तानी एक्सपेक्टेड ग्रीवेंसेस को दूर किया है. ये 2 चीजें मैं इसको डिटेल्स के लिए इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड तो मैं छोड़ रहा हूं अपने कमर्शियल काउंसलर और अपने डिप्टी काउंसलर जनरल शोएब सरवर और आतिफ अजीज के लिए, वो आपको ज्यादा इस पे रोशनी डालें. मैं आपका शुक्रगुजार हूं. मुझे बड़ा पेशेंस के आप सुनाए, लेकिन बीइंग ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मेरा ये ख्वाहिश थी कि मैं थोड़ा सा
अपने दिल को और अपने दिमाग को खोल के आपको बताऊं कि पाकिस्तान को जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्ट किया जाता है, इवन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये भी ग्रीवेंस है कि इवन हमारे पाकिस्तानी भी उसको बड़ा नेगेटिवली कभी कभी प्रोजेक्ट करते हैं। खुदा का वास्ता है, आप देखें, सीइंग इज बिलीविंग, आप हमारे वेबसाइट्स पे जाएं, वहां पहुंचे, मेरे कमर्शियल काउंसलर को अप्रोच करें, वो आए ही यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स को और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ब्लेस यू। वकार खान साहब, मैं वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर टीम। जमाल ख्वाजा साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है और इस किस्म की कोशिशें करते रहे, इंशाल्लाह ताला मंजिलें हमारी आसान होगी। बड़ी मेहरबानी। जमाल साहब, डेफिनेटली आज के ये सेमिनार और वेबिनार जो है ऑर्गेनाइज बाय ऑफकोर्स ओपीटीवी ग्लोबल टीवी नेटवर्क का मैं सीईओ हूँ, और आज बड़ी खुशी की बात है 3-4 डायरेक्टर मौजूद है, जिसमें डॉक्टर सोहेल मसूद साहब अब लीडिंग डायरेक्टर हैं, इन्वेस्टर हैं, इसके पैटर्न भी हैं, और जनाब डॉक्टर आमिर कुरैशी साहब इज आवर चेयर हैं ओपीटीवी ग्लोबल के। डॉक्टर सना खान यहाँ मौजूद है, इज वन ऑफ द डायरेक्टर एंड इन्वेस्टर इन आवर ओपीटीवी ग्लोबल नेटवर्क। और आज के को होस्ट मेरे दोस्त और होस्ट जनाब जमाल ख्वाजा साहब। जमाल ख्वाजा साहब, अपना तरह ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे। इसके अलावा सूबिया जो है हमारी ब्यूरो चीफ है और न्यूज़ कंट्रोलर है कराची में, जिन्होंने सारा ये कोऑर्डिनेशन किया है, वो भी थोड़ी हाईलाइट देंगी। जमाल साहब, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद में नजम खान साहब ऑन बोर्ड आ गए, उसके बाद हमें ओपन फ्लोर करेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया वकार साहब। मैं अपने बारे में बहुत कुछ तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आईआरएस भी देख रहा होगा ये प्रोग्राम। मेरा रियल स्टेट से ताल्लुक है। मैं रियल स्टेट एक कंपनी है मेरी जेएफके रियल्टी के नाम से, और उसके अलावा मेरे पास 4 या 5 ब्रांड्स हैं जो लोगों ने देखे हैं यहाँ पे, KW, रीमैक्स, MG21। मैं कुछ उनके भी स्टोर्स या उनके भी ऑफिसेस को ओन करता हूँ। मेरा मेजर बिजनेस लेंडिंग है, मैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल लेंडिंग करता हूँ। लास्ट 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स लोगों की मदद करता हूँ रियल स्टेट खरीदने में, बेचने में और इन्वेस्ट करने में। आतिफ अजीज साहब, आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस और जो अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, खास तौर पे अमेरिकन पाकिस्तानीज के लिए, प्लीज उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम ऑल रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानीज। वकार साहब और जमाल ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्योंकि हमेशा इनको मैं देख रहा हूँ उसमें मास्क में, तो मैं उनको मिक्स कर रहा था किसी और से। वेलकम ऑन बोर्ड। सर थैंक यू सर। सर बहुत शुक्रिया सर इस वेबिनार के ऑर्गेनाइज कराने के। सर हमारे जो सीटी जब्बार मेमन साहब ने एक बहुत अच्छा ओवरव्यू आपको दिया सर। सर पाकिस्तानी अमेरिकन, तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो बहुत इजी टू डू जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करा है, वो जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, और उसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, जो कि एक सॉवरेन गारंटी के साथ है, जिसमें आप यही अमेरिका में अपने कंफर्ट ऑफिस और घर में बैठे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें 5 to 7% जो डॉलर्स टर्म्स में अगर आप लेते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, तो उसमें आपको रिटर्न्स उसमें मिलेंगे, जो कि अमेरिका में शायद 0% इस वक्त डिस्काउंट रेट है या इंटरेस्ट रेट है। तो एक ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ से हैसल फ्री, और डॉलर जो सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को फर्दर रिड्यूस और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए, ये तो एक सबसे इम्पोर्टेंट और इजी स्टेप्स यू कैन डू फॉर द पाकिस्तान सर। बाकी सीटी साहब ने जो 6 सेक्टर्स बताए, दो ऑल सेक्टर्स आर ओपन फॉर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान, बट जो 6 जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज की गवर्नमेंट ने जो स्पेशल पैकेज भी अनाउंस किया रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन का, मगर उसमें कि आपको पाकिस्तान में एक प्रेजेंस चाहिए होगी, कोई आपको अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी होगी या जॉइंट वेंचर्स करना होगा। इसी तरह होटल्स इंडस्ट्री स्पेशली केपी के रीजन में बहुत सी गवर्नमेंट ने पिच किए हैं, वो आई कैन शेयर फर्दर डिटेल्स। जो भी पाकिस्तानी अमेरिकन उसमें इंटरेस्टेड हो, आई कैन शेयर फर्दर डिटेल्स। वी कैन कनेक्ट यू विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की या गवर्नमेंट ऑफ केपी के जो रेलेवेंट ऑफिशियल्स हैं, जिसमें आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न स्पेशली डोमेस्टिक टूरिज्म पाकिस्तान में बहुत इंक्रीज हुआ है जैसे जैसे वॉर एंड टेरर पे हमने कामयाबियां हासिल की हैं। तो इस किस्म की चीजें प्लस जो मैं एज ट्रेड एंड कमर्शियल के पॉइंट में से एक बात करना चाहूंगा कि जी पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेशली फॉर द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैंने सुना कि जी ये बना रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स बना रहे हैं। एक पाकिस्तानी कंपनी है जो वहां पे ट्रेनिंग दे रही है ओपन के प्लेटफॉर्म से, नवीद शेरवानी साहब की लाहौर के अंदर। इस किस्म की अगर आप लोग फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें पाकिस्तान के HR के अंदर, चाइना US ट्रेड वॉर है,
اس حوالے سے اگر آپ کی پروڈکٹس دیکھنا چاہیں. پلس ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, جرنلائز سسٹم آف پریفرنسز ایک یو ایس گورنمنٹ کا پروگرام ہے جس میں 3,500 پروڈکٹس کموڈیٹیز جو ہے وہ پاکستان سے زیرو ریٹڈ امپورٹ کر سکتے ہیں آپ امریکہ میں, تو آپ کی پرائس ایک کمپیریٹیو ہو جاتی ہے, آپ کو ایک بہتر پرائس مل سکتی ہے بنسبت ویتنام, چائنا یا ادر کنٹریز سے آ رہی ہے. وہ لسٹ ساری آن لائن بھی اویلیبل ہے, میں بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکتا ہوں, فردر ڈیٹیلز اور انفارمیشن بھی اس میں دے سکتا ہوں, اور کنیکشن ود دی ریلیونٹ پاکستانی مینوفیکچررز جس کے ساتھ آپ کوئی جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں اپنی یہاں پہ جو ایکسپورٹ کی پورٹ فولیو ہے یا امپورٹ انٹو امریکہ کو بڑھانے کے لیے. اسی طرح جو امریکہ سے امپورٹس پاکستان جا رہی ہیں اس کے اندر اگر آپ بھی یہاں پہ لے کے جانا چاہیں فوڈ چین انویسٹمنٹ, پاکستان میں فوڈ انڈسٹریز بڑی وائبرنٹ ہے, لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی کھانے کی کوئی نئی چین وہاں پہ لے کے جائی جائے, جیسے پی ایف چائے ایک وہاں پہ گیا ہے امریکن چین فوڈ کے حوالے سے. تو بوتھ ویز انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اینڈ ٹریڈ اپرچونیٹیز آر اویلیبل. فردر ڈیٹیلس چونکہ ٹائم از لمیٹیڈ آئی کین شیئر, میں میری سارے ای میلس جو کانٹیکٹس ہماری کانسولیٹ کی ویب سائٹ پہ بھی ہیں, جمال خواجہ صاحب اور وقار صاحب سے ریگولر بیسس پہ رابطہ رہتا ہے, تو آپ کو میرے کانٹیکٹ ڈیٹیلس ہماری کانسولیٹ کے پیج اور ان کے تھرو بھی ملیں گے. اور آئی ول ریکویسٹ کہ آپ مجھے اپروچ کریں اور فردر انفارمیشن آپ کے سیکٹر اسپیسیفک یا پروڈکٹ اسپیسیفک, آئی ایم ایٹ یور سروس, دی کانسولیٹ آف پاکستان ایٹ یور سروس. دیٹس آل فرام مائی سائڈ سر. تھینک یو سر. ایک سوال صرف عاطف بھائی, آئی تھنک میں نے جو روشن اکاؤنٹ کا پروگرام دیکھا تھا اس میں کیا اب ہم پاکستانی امریکن اسٹاک ایکسچینج میں بھی حصہ لے سکتے ہیں؟ کین یو کلیریفائڈ آن دیٹ پلیز؟ جی بالکل سر, یہ جو لاسٹ ویبینار ہوا تھا اس کے اندر بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ڈپٹی گورنر صاحب نے کہ بالکل آپ سر پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پہ بھی آپ وہاں پہ انویسٹ کر سکیں گے, جس میں آپ کو پاکستان کے جو ریئل اسٹیٹ بروکنگ ایجنسیز ہوتی ہیں, جو انہوں نے 5 یا 6 نام بھی اس میں مینشن کیے تھے, آئی کین شیئر دوز نیمز, ان کے تھرو جیسے آپ امریکہ میں ایک بروکنگ ایجنسی اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو آپ کے بہاف پہ انویسٹمنٹ کرتی ہے, تو بالکل پاکستان اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ جو کہ ایک بہت اچھی پرفارمنگ مارکیٹ ہے اسپیشلی ان دی ایشین کانٹیکس, اس میں آپ بالکل سر انویسٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Mr. Atif. Now Najam صاحب on board. نجم صاحب جو ہے ان کا تعلق کرٹیسی بزنس ہے, ہوٹل انڈسٹری سے ہے. نجم صاحب is a very high position on Treasure Island casinos. Everybody know that who go Las Vegas. So Najam Sahab, you have almost 40 years experience. You served in Pakistan in hotel industry. You are one of the pioneer in our society in entire America. Just please. Thank you, Waqar. Yes. Thank you, Waqar. Yes, I have been in, I am the Executive Vice President General Manager for Treasure Island Hotel and Casino. And it's one of the 20th largest hotel in the world. It has almost like 3,000 rooms, almost 16 restaurants, and it's all casino basically. 1,600 slots, fantastic theater which has 1,600 seats. It does almost like $442 million in good time, which not before COVID-19. And I've been in this business since 1972. I started my career in Holiday Inns, and I did work in Pakistan at the Marriott and Continental Hotel in Karachi. And I'm really, really appreciative of Waqar to bring me on board on this with this panel, which is a great panel to be on. Thank you so much, Waqar. I have Mr. Mehboob from Sindh Investment Federal and Provisional Department, اور انہوں نے ہمیں ایک presentation بھیجی ہے. So if you don't mind, if I can share the presentation, and then I will invite Mr. Mehboob to speak on behalf of definitely Investment Board. کورونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کریں. کمیونٹی کورونا وائرس ٹاسک فورس گروپ لاس اینجلس آپ کی خدمت کے لیے متحرک اور تیار. اگر آپ کو کورونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لیے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ٹاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں. شکریہ.
So this is general information on the province of Sindh. I represent the investment department, which is based in Karachi, and we are responsible for promoting investment within the province. And we are the focal department for facilitating investments. So these are general slides highlighting the investment potential of the province, giving you demographics. So we are encouraging investments in our agriculture sector, in the tech sector, health. हमने agriculture में मुख्तलिफ areas में right into various value chains. उसमें we welcome foreign investment, and we when you raise a loan on an agri-business project, गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपको मार्कअप सब्सिडी प्रोवाइड करती है. हाल ही में हमने नेदरलैंड्स के कंपनी के साथ लोकल कंपनी का जेवी कराया, और उसकी जो टोटल डेट थी 160 मिलियन की, उस पे हम उनको मार्कअप सब्सिडी 3 से 5 साल की दे रहे हैं. इस तरह जिस तरह अभी हमारे इन्वेस्टमेंट काउंसलर साहब ने बताया कि देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इन द एग्री बिजनेस एरिया. हमारे पास एग्री प्रोड्यूस है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन नहीं है. एंड सच joint ventures are welcome, where value addition and processing can be introduced in the country. Venus Foods वाले हाल ही में हमें बता रहे थे, वो IQF सिंध में ठीक ठाक fruits and vegetables होते हैं, and if they can be individually quick frozen, a project size about $4 million, and they are bringing it with the American collaboration. American Business Council की मीटिंग में उन्होंने और इस प्रोजेक्ट में जो भी डेट होगी उसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध सब्सिडाइज करेगी. तो अपॉर्चुनिटीज टूरिज्म में भी है, एग्री बिजनेस में मैंने बताया. हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपनी डिजिटल स्ट्रेटजी लॉन्च की है, जिसमें हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं बाय गिविंग देम वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फंडिंग. इसमें मैंने कुछ लोगों के प्रोफाइल पढ़े, उनका ताल्लुक सिलिकॉन वैली से है, एंड दे हैव बीन इन द वर्किंग इन द टेक स्पेस इन यूएस. So those Pakistanis who are there in entrepreneurship, technology side, digital side, bringing solutions in health, education, agriculture, they are also most welcome. We have initiated a robust incubation sponsoring program जहाँ पे startups operational cost को ना सिर्फ sponsor किया जाएगा, so that they can provide incubation services to startups, but उनकी funding के लिए भी हमने allocation रखी हुई है. Jamal Khwaja साहब has my coordinates. He has my contact details. Sindh Enterprise Development Fund की website भी है. I am reachable on WhatsApp also, so do reach out. Tell us your area of interest, and we will be able to guide you what incentives and benefits are offered by the government of Pakistan and the provincial government. But it's really such a pleasure and honor to know that people in Pakistan are thinking on the same line, that how to invite businessmen from all around the world to come and join Pakistan. So once again, Mehboob Saab, thank you very much for joining us. So now we are opening the floor, and definitely anybody can raise hand, and Jamal Khan will bring him up. कि देखें हमारा पर्पस और जो मकसद इस सेमिनार का और वेबिनार का कि what is your expert advice, such as let's say Mr. Najam Khan on board, and he's running one of the largest biggest hotel casinos in America, and he served in Pakistan, and also Mr. Lakhani on board as well. So I need a suggestion कि how we can really bring the more brands and more hotels in Pakistan, and what they need from government of Pakistan. Mr. Najam, can you explain? Well, you definitely can bring a lot of brands in Pakistan. It's just a matter of structuring it, where they definitely can. I don't know who are the people that are. I mean, the Marriott's already there. There are Hilton. I don't know whether Hilton is there or not, but yeah, there are a lot of brands that can be there in Pakistan as long as it is structured properly. That's all. Yes, good afternoon, everybody. Assalamu alaikum. I think
Mr. Najam has said a very important thing, that there's a lot of opportunities in the hotel industry. I've been in the hospitality industry for more than 40 years. And I think this really the right time, in my opinion, if we can figure out the infrastructure and capital investment in Pakistan. I mean, there are a lot of brands like Hilton, Marriott, Wyndham, Holiday Inn. They like to go there. I think Pakistan needs high-end resort hotels, and also along with that, we need some corporate hotels and some transient hotels, traveling highway hotels. So I think if we can figure out a structure where we can really get the help of the government to make sure that we have the right location, along with the feasibility study done by our own team. MashaAllah, if somebody can take a look at my Superhost Hospitality website, we had experience in working with Dubai in 2001, 2002, before the crisis came in 2009. So we can replicate the same model of Dubai and really structure in such a way where everybody can participate. You know, we have a GPLP type setup structure where, like you said, sometimes General Motors and big accounts like that in Pakistan, like Emerson Electric, GE, pharmaceutical companies. Besides that, there's a lot of travel and tourism opportunities in Pakistan, in frontiers and Punjab areas, where I think if we can get the infrastructure right and make sure that we can promote the travel and tourism throughout the country, not in Pakistan, but throughout the global countries, United States, England. I mean, if you look at different models, travel and tourism has brought a lot of revenue. We create a lot of employment, so really help bring the dollar in Pakistan. And also, the most important thing in my mind, I like to really develop a small program for internship or mentorship where young guys can really rise to the occasion and meet the challenges of the economy, and hopefully cut the poverty, and hopefully really a good what do you could call midstream life, and maybe someday they become big shots, inshallah. So I'd be more than happy to answer any questions. I'm really looking very hard. As a matter of fact, 2 days from now, I'm bidding the CDA, Islamabad and Blue area. I'm trying to bid in the auction. If I'm successful, then you will know my plans. I'll share more, with all of you. I'm always looking for and open for ideas and suggestions from anybody on the panel. Thank you. Here, and I'm going to be inviting Naim Siddiqui. He's rebuilding the electric distribution panels for the Edison and the big companies in America. And Pakistan facing a lot of issues about distribution of the electric and other issues. Definitely, he's looking for a collaboration in Pakistan. He's looking for his drawing and engineering, mechanical management in Pakistan. Naim Saab, you on board? Okay, thank you, Waqar Saab. Assalamu alaikum, everyone, once again. Obviously, with technology, Pakistan, of course, I'm a product of Pakistan, graduate of NAD University. So I know the talent is there, the resources are there, the capability is there. I just need to find a way to harness this through, let's say, a party in Pakistan that is interested in using local engineering talent to develop a company that provides engineering services in all areas, especially the electrical and mechanical side of what we do. We have engineers in Canada, of course, in California and in Dallas, but we do need a lot of engineering. It's hard to get engineering capability here. I mean, the costs are pretty high. And I've had some experience bringing Pakistani folks on the H-1 visa program. Very painful. So my thought is, if we can get someone to work with us and develop this as a capability that goes in Pakistan, eventually we can look at building hardware and products there as well. Thank you. Yes. Definitely, you heard Mr. Naim Ahmad. He is want to build another biggest company in Dallas. They're looking for land and opportunities and the people support. I think you are the represent business industry there. And tell me how you can really build the beverage industry in Pakistan. Thank you, Waqar Khan Saab. Sabse pehle to I just wanted to say thank you to Jabbar Memon Saab for giving us what the great information about all of these progress in Pakistan going. Honestly, by listening from Jabbar Memon, it seems like it's a very great timing for the country, and also I think it is an opportunity to grab this kind of thing
to get our country into the right direction. As an industrial person, I feel like that without bringing a positive note, you cannot bring the industrial revolution in the country. So to bring the industrial revolution in the country, I think Pakistan is hungry for business right now. It's no doubt a lot of young talent, young people over there, plenty of opportunities. I think we have to really grab that opportunity and make sure that our country people are getting the right information. People like me and all of the people that you have on your panel, there are a lot of information that they can pass on and get our country in a better way. But if you look at China, how China had won the industrial war, because China, I think most of the companies in China always compromise on the quality. But unlike Europe and North America, they're always the top priority is the quality. And I think in Pakistan right now, the labor is cheap and we can focus on great quality. I think we can produce a very great products and we can export to Middle East and North America and Europe. I think this is so important for our people to know that there should be no shortcut. Don't do any shortcut. Make your facilities or state-of-the-art facility and focus on it. Even if you are not a very rich person and you want to start small, but you make sure that you bring great quality products to the world. And once you get to that thing, I think it's a long process, but it's going to be successful for the long time. So this is all I want to say right now. And inshallah, in the future, if you need any further assistance, we'll definitely be there to help our Pakistani people. Thank you. Dr. Sohail Masood Saab, you are the most successful Pakistani American. You fought many wars on the front in Washington, D.C., bringing your healthcare technologies and facilities to the patient care. Okay, and as you know that your product IVIG immunoglobulin is the very important product to be launched in Pakistan. It's there, but not that much. So what do you suggest how to give the better healthcare services to the from grassroots to the upper level? So thank you, Waqar bhai. Basically, when we are looking at business opportunities in USA versus business opportunities in Pakistan, I really do not know much about the Pakistani, how the businesses work. When I left, I was 19 years old. So only experience I had was going to Punjab University in Lahore. And that's all I remember. Even that was only first year. So my worry is that in America, the businesses are very simple to do. And that's why we are so successful. We don't have to pay rishwat. We know the laws are there. We apply to the state board. We get the license and we start practicing and we follow all the laws and rules and regulations and the companies prosper. And this is why this is my third company. And each one prospered because the system is there. When I look at Pakistan and I look at the healthcare in Pakistan, and we are 3 healthcare providers at least on this call, I really don't know much. Who is paying? Is the private insurances who pays? Is the government who pays? Who pays for healthcare? I have no understanding. So for me to get involved in Pakistan and to get into healthcare, I really need to sit down with somebody who knows how healthcare services are paid in Pakistan. What I do from Kaaba Fusion and what I did for Crescent, I've been doing it for the last 30 years. And I can do it really well, but I can do it when there's a structured environment. So in America, we have that structured environment. In Pakistan, we don't know. But home infusion is really the way to go, where the nurses and medicines go to patient homes, especially the towns and communities where there are no big hospitals, not too many doctors. Home infusion really is the way to provide services to patients. And we provide services to all patients, old, young, babies. Everybody benefits from our services, even though we focus on IV immunoglobulin. But that's not the only thing. We do TPN, we do pain management, we do antibiotics and all kind of things, chemotherapy. So those services are really very important for Pakistan, Pakistani Awam, but the problem is I don't know how it's set up. So that's where my dilemma is. Thank you, Dr. Saab. And now I'm going to come to Mr. Sey Agey Saab.
Sey Agey sir, mashallah, you are operating from Canada, Ottawa, and you have your eyes on many business and entrepreneur. Tell me how we can really promote investment from Canada. Thank you very much for having me. And I know you for 30 years, and you was in Canada when we started after 9/11 journey to Pakistan. On that time, I remember some Pakistani kids who goes to university, they call themselves from India. And I asked them, why are you calling yourself Indian when you are Pakistani? They said, we are very scared. From that day, we start working to encourage overseas Pakistani to say we are Pakistani. And then you see, we started journey to Pakistan. After listening all these great people and great ideas, what I will suggest, why don't you make a group of these people and we'll just go sit down with Imran Khan directly. I can make the arrangement. I know Imran Khan for 25 years. I know the president of Pakistan. I know everybody there. Razak Dawood will be very helpful because he's the commerce minister. So let's sit down with them, and then all the red tape is gone. And this is brilliant ideas I have heard, and that could be very successful meeting. And then everybody will be encouraged by meeting with Imran Khan and giving them their own ideas. Because what happened, unfortunately, ye ek alamiya hai, when we put our programs, it doesn't go to Imran. It just stay in the middle and some minister in here and there. So that will be my idea. We should go to Imran Khan, sit down with him and talk to him and give the ideas. I met him in last 3 months, almost 27 times. I was in Pakistan for 3.5 months, and we are non-profitable and non-political people. We're just helping to have a dam in Pakistan, which is in United Nations report in 2026, will be very hard on Pakistan. Will be no water if we don't build the dam. So our focus is just to build the dam, but this is incredible people and have a wonderful ideas. They should be present to Imran Khan directly rather than going through with different people. That will be my suggestion. And I was meeting with the... Let's go ahead and make this arrangement. We're going to create a group. It's called Bridge. And then we'll find a suitable time for availability of all these individuals. And we're going to make a delegation. We meet one-to-one. They're not a problem. Thank you very much. So as you have mentioned before that your team, and I have seen it myself, a huge team of researchers, as Sohail Masood Saab, a very dear friend, have asked this, that he likes to know the system, how this medical system works in Pakistan. Can you put some light on it? And especially the Ehsaas card, which in my understanding is that every Pakistani can have an excess of 7 lakhs rupees. Could you put some light on this, please? Jamal Saab, I have a question, Mr. Nasir, that how to take company public from United States of America to the Pakistan exchange. That's also very important. A lot of companies, Mr. Gauri Natsol, he took company from America to Pakistan and NASDAQ as well. Lovely, sir. And thank you so much for asking these questions. I think all of them are very pertinent. So first of all, regarding the pharmaceutical sector and the healthcare sector, because the question was that since you know that in countries such as US, it is the insurer who pays for everything. And you just need to go into a hospital, show your insurance card, and everything is taken care of. And an extent further is countries such as UK that has the largest healthcare system. So NHS there takes care of every individual who is a UK national or maybe a resident alien in UK. In Pakistan, unfortunately, before Imran Khan, this was not the norm. And he is one person who is hell-bent on creating a social infrastructure in Pakistan and to make it a society where the government's focus is to provide welfare to a common person. And with that objective in mind, he went ahead with Ehsaas card, as was being mentioned by Mr. Jamal. So let me give you the initial or the footprint as it stands today. In Pakistan, there is no system of insurance. It's a very thinly, reached out country in terms of people who have got themselves insured in terms of health. The government, before Imran Khan's government, never provided for any healthcare insurance.
So whatever healthcare was being provided, either it was in the government sector, and the government sector healthcare has always remained very poor in terms of its service, in terms of the quality that they provide, and certainly it is not accessible to every individual because there is a dearth and a huge shortage of hospital beds in Pakistan, together with the ancillary facilities that are required for any care that has to be taken. So private medical hospitals and private medical pharmaceutical companies, they have been making a lot of money because it's a revenue making and a profit making venture in Pakistan. Since being in private sector, a lot of hospitals, they charge you an exorbitant amount to provide you healthcare. For the first time, Pakistan's government has issued Sehat cards, which allow every family to have access to an amount of 600,000 rupees per annum. Now, this is going to be a game changer because this means that the government has now stepped in to provide a medical insurance for individuals who live in Pakistan on a family basis. Now, if this penetrates and this becomes a success, as we all believe that it will eventually, government resources are limited, but as we go along, the private insurance companies will also collaborate with the government of Pakistan to provide such facilities, and that would be a huge change as far as the healthcare system profitability, number two, in terms of its footprint, and number three, in terms of the welfare that is required. So certainly the change is on the card. I hope this answers the question of one of the individuals. And two, regarding your question to get a company listed out of US that has been working in the US to get itself listed on the Pakistan Stock Exchange. So there has been a precedence, and if the company feels that they are happy to risk, generally what we have seen as a practice is that companies normally go for access to capital from the Pakistan capital markets, and they list their holding companies in countries such as US and UK. And generally speaking, for them to get onto the main board is not easy because there are certain requirements which are related to the size. If the size is not there, then they have the option of getting themselves listed on a junior board. So the same can apply in Pakistan. In Pakistan, there is no concept of having a junior board and a senior board. So we have one stock exchange that caters for the requirements of businesses. And Pakistan would be extremely pleased to offer this to the companies that are based out of US if they feel that they want to raise capital out of Pakistan. So they are more than welcome. And just to add a figure, in Pakistan currently, roughly more than 30% of the free float, which is traded on the Pakistan Stock Exchange, is owned by foreign fund managers and foreign companies. And out of that 30%, majority is coming in from US, followed by UK, and then elsewhere. So I won't let you go without asking one more question, but thank you very much for very informative, and I'm sure the entire panel and all the people who are listening to this will enjoy the information. कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी की मदद करें। कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स ग्रुप लॉस एंजलिस आपकी खिदमत के लिए मुतहरिक और तैयार। अगर आपको कोरोना वायरस की इलामत है या उसमें मुब्तला है तो मदद के लिए पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टास्क फोर्स से फौरी इस नंबर पर 310-424-3686 पर रब्ता करें या इस वेबसाइट पर रुजू करें। शुक्रिया। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
is the Pakistan Stock Exchange market is doing right now. Everybody is saying that it is number one, number two stock exchange where money making concern. So tell me, how is Pakistan Stock Exchange is doing currently? I think Pakistan Stock Exchange has done phenomenally well. One of the participants did allude to a very important point that we as Pakistanis, we have to blame ourselves, which not includes just the overseas Pakistanis, but Pakistanis who are on ground, because we have always failed to set the narrative right of our country and the opportunities that exist. Pakistan is also a land of opportunities, and when we tell these figures to the fund managers abroad, then they come here despite knowing that within their metrics, they rate Pakistan as a high risk country. But this is one country which, despite being high risk in the eyes of a foreign shareholder or a foreign investor, offers one of the highest possible returns that you can hope for. Just to give you a perspective, the average return on equity on the Pakistan Stock Exchange of companies is north of 20%. So coming back to the point, so the dividend yield is north of 6%. So there is an opportunity of great arbitrage that you can borrow in US dollars and you can deploy in Pak rupee and having access to extraordinary capital gain. Certainly, Pakistan in these days has been amongst the top 3 best performing stock exchanges in the world. And this is courtesy to the fact that Pakistan has not been that severely hit with the coronavirus, both economically and in terms of administrative task. And we have been very fortunate because I'm in London, and the talk of the town Pakistan and what policies Pakistan did deploy, that coronavirus has not spread in Pakistan the way it has shattered India, the way it has troubled US, or the way it has troubled UK and the other European countries. So this is the dividend that you see on the stock exchange, that whatever we thought that is going to happen post-coronavirus economically, one, the government policies have been very investor friendly. And when I say investor friendly, then please keep in mind that we have limited resources to take care of the corporates and the people that are there in Pakistan. We are not like US, we are not like any other Western countries that we have abundance of resources to pour money in. But despite the challenges, the kind of steps that the central bank took, and number 2, the policies that government came out with, they have all helped the stock exchange to perform, rather outperform globally. So again, I see that the multiples at which Pakistan Stock Exchange is being currently, it is giving an opportunity to earn a return of over 100% if you compare yourself with other markets. Thank you very much, sir. And now I'm going to come to the very important subject, education in Pakistan. So I have on board with me Mr. Dr. Sana Khan is working on education, because there's a lot of issues about getting the visas and the I-20s from Pakistan, and everybody going online education. So recently we contact several universities and the colleges. They are interested to offer education in Pakistan, being an American student and being admitted in the university and colleges and get the AA degree or university degree. I have to really tell on behalf of the Dr. Sana Khan, we recently signed the contract with the Santiago Kenyan College, the 3rd largest college in the nation. They're offering a direct degree to the Pakistani student. They can get an admission. They can get classes online. So it's going to be, inshallah, the next month is going to be operating. And those students are going to be transferred at different universities of the United States of America. So, Great. Yeah, if they Very have a great. 3.5 GPA, so they are going to get a visa very easily. And sitting in Pakistan, they're going to get a degree, American degree, okay, AA degree or a BS degree. So, is this way anybody can cooperate or be interested? We are open for that. Okay, Yeah. Mr. Jamal. No worries. I just wanted to give little feedback about Mr. Kamran Nasir. Kamran Nasir is heading JS Bank Brokerage. He's been with them since 2010. And from 2010 to 2015, he have taken the company growth to 200%. He's an extraordinary smartest man I have ever met. And he holds a chartered accountancy, like a CPA here. We have chartered accountants in Pakistan. He holds a degree there. And he sits on multiple boards, including IBA and Vagara Vagara.
So at this point, I would like to discuss with Mr. Mehboob, as I have personally met him and personally discussed a couple of projects in Pakistan. Mr. Mehboob is also a very unique individual who's very much involved with Sindh government investing lot of sectors like agriculture, as he have spoken before. I unfortunately could not play the presentation, but the presentation was very powerful to show that there is so much opportunity in Pakistan. So at this point, I would like to bring Mr. Mehboobul Haq again back and just speak a little bit about and tell us, sir, what are the real opportunities being a Pakistani American, how we can get more involved, help our country and make some money. Go ahead, sir. Now, one more question, Jamal Saab, before Mehboob Saab coming on board. I have two questions for him. Okay, how to build the refrigerated warehouses in Pakistan, how to expand the warehousing system in Pakistan, as in the vegetable market, in the end of the day, they throw the ton and ton vegetable on the garbage. So they asked me if we have a refrigerated freezing warehouse and a packing warehouse, so if we can ship this frozen vegetable all over the world. Ji, Waqar sir, thank you, and Jamal sir. Storage and processing for our agri produce has been a challenge, and we welcome investments, as I told you, through the American Business Council. We are currently trying to facilitate an IQF, individual quick freeze facility for our horti produce, which includes fruits and vegetables. So tens of such facilities are needed, keeping in view our production and the export potential. And we are sitting right next to the multi-billion-dollar Middle East industry, and we can be the food basket. Pakistan is ideally located to be the food basket for the Middle East. So processing, value addition, storage, as I was mentioning it to Mr. Jamal earlier, Trainer Foods of California are known for huge production of tomatoes, which goes to waste. The prices at the time of harvest are as low as 5 rupees a kilo. So there's huge opportunity. So companies like Trainer Foods, companies, those are in the logistics business, and there are benefits also, advantages, financial assistance program for companies coming in these areas. So the government supports such initiatives. And Jamal Saab, kindly share my contact details with the participants so that they can reach me out directly, and I would love to answer their queries. So in the tech area also, like you mentioned, there are people working in the Silicon Valley, Pakistani people who can connect Pakistani startups, or who can benefit from the young population, Pakistani population, which is involved in the tech space of the country. They're very promising young individuals. They have brilliant ideas. People, Pakistanis here in US in the technology space in the Silicon Valley can help them. We as government are offering them financial support, information support, and Jamal Saab, if separately, once after this webinar, you can share contact details of persons working in the Silicon Valley. So I'll reach out to them and seek their ideas, how we can collaborate and create those synergies. Yeah. Definitely, Thank sir. you. But I, on behalf of entire team of mine, I want to thank you for giving us this opportunity and giving us so much valuable information. All these people and even the rest of the people who are seeing us on Facebook, I'm sure they'll have contacts and they will have questions, and I will send it across to you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Jamal. Very good information, Mr. Mehboob Haq Saab, and especially Mr. Nasir Kamran Saab. You're really an asset. And chairman, people like you in Pakistan is a really light of the progress. And as I'm the founding chairman of the Pakistan American Chamber of Commerce, we have a lot of member board of directors, and they're going to be making some bridge this trade activities with the Consul General of Pakistan and Mr. Atif Aziz Saab. And thank you very much. मैं इस वक्त ना आउटसोर्सिंग के बारे में किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं की,
कोविड-19 से जो मैंने सीखा और सबसे बहुत ज़्यादा लोगों ने ये बात सीखी कि either my office is in Sacramento and my employees is sitting in Fresno or in Washington or in Pakistan, doesn't make any difference. हालांकि ये इतनी बड़ी मार्केट है कि even you look at the Brazil is the biggest market in outsourcing. और ये एक ऐसा ये बिजनेस ट्रेड है जिसमें बहुत ही कम जो है ना मनी जो है या जिसमें आप स्पेंड करते हैं कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट कम है हाँ बहुत कम लेकिन ये है कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं बहुत ज्यादा इससे आप दो फायदे लेते हैं एक तो वहाँ की आप यंग जनरेशन जो प्रोफेशनल है उनको आप एक एजुकेट कर रहे हैं और वो जब अपने कंट्री यानी हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो खुद भी अपना वही प्रोटोकॉल और वही स्पेसिफिकेशन जो यहाँ फॉलो करते हैं द सेम थिंग दे विल ट्राई टू फॉलो द सेम प्रोटोकॉल स्पेशली इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आई विल टेल यू actually you know a few of my American company actually I talk with them and they are ready to actually hire a few people over there like I hired like last month like 4 engineers and they are actually working well तो मेरा ये है कि स्पेशली ये जो डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का काम है rather than to spend and do a lot of investment over there I think in the beginning we need to focus on also in the outsourcing तो इस सिलसिले में लोड शेडिंग भी आजकल सुना कम हो रही है तो इससे ये भी एक बड़ी एक फेवर है बस दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर एट दिस टाइम थैंक यू वेरी मच सर वेरी वेल सेड आई एम श्योर all of our investors friends here will pick on that जी वकार साहब जी तो माशाल्लाह I'm really very excited about all the healthy discussion or proposals I have few things to talk about actually जो I think Maqbool Haq Saab chale gaye, I believe, and I really appreciate this Kamran and gentleman that spoke highly. I mean, he's very knowledgeable. I think काफी जो investment है बहुत अच्छी government ने काफी अच्छी initiatives लिए हुए हैं, लेकिन I've run into myself trying to create some new companies in Pakistan where corruption still exists. Actually, corruption has gone up because अब इतने systems बन गए हैं कि अब वो लोग ज़्यादा corruption हो रही है. I'm just giving you example so we can solve it, so we can move on to promote Pakistan. You know, I mean, these are the things that on the ground we have to fix in order to get to create good stuff in Pakistan. It's a simple things like IT stuff. Few things can be maneuvered just as IP phone system. I'm just telling you, I ran into these hurdles, but we're still progressing. Look, my goal is not to demoralize Pakistan. I'm always here to help Pakistan. And one of the fact was, I was going to mention that what can government do to stop being bashed by these other people who are continue bashing that Pakistan's economy is bad, and we are hearing very good stuff from these gentlemen. That's what I'm saying. These are encouraging numbers that they're talking about. So we need help. These are the things that this bridge group can talk about, bring to the people in Pakistan that we want to work. You know, if we can get these things going in the right direction, such as, I'll tell you from healthcare again. You know, Dr. Sana is doing a great job by patching up with the new university. These are programs that we do need to do. I mean, there's such a huge need. Like nursing homes. I've always talked about nursing homes. There's such a huge need of nursing home in Pakistan nowadays. And I think this group can bring that expertise with Dr. Masood on board, Sana, myself, and these technology people. Outsourcing, again, I'm trying to make up a back office, you know, to create jobs there and cut costs here. These are really great ideas what we have to do. Sure. So I think if we work with these officials, Dr. Jabbar Bhai has really come along and has helped us. So I think these are all good ideas. We just need to figure out how to implement them. Sure. That's where I think our group can work together
to Definitely. start implementing. So Javed ask Saab that wants how to to give we some build views. a semiconductor or chips technology in Pakistan, because we're listening a lot of talk, lot of seminar in San Francisco, San Jose, FASAP came here and there, but talk is the crossing. But now we need a real kind of investment and opportunities to really start semiconductor or chips technology in Pakistan. That's it. Okay. So thank you very much, Waqar and Jamal, for hosting this event. Jawar Mehman Saab, CG, gave new policies and some of the positive new changes. I have basically listened to all the speakers and all the panelists, and I have three basic points that I would like to share. And point number one is that if you look at the growth and success story of China, Taiwan, Hong Kong, South Korea, the first wave of investors were the expatriates. The first larger industries set up in Taiwan, in China, in Korea were the Koreans, Chinese, Taiwanese, going from overseas, setting up factories, setting up businesses, and creating jobs, but also strengthening the export of the country. So the first row of investors is going to be among people like us, people who understand the international markets and can leverage and have some understanding of the local Pakistan market, and therefore can leverage the cheap labor to produce goods and services which are in demand here. So first point is that the first wave of investors we need to focus on is the expatriate Pakistanis. Point number two, we are all in businesses. So one of the easiest things, one of the most positive things we can do is to move our back office operations to Pakistan. In the COVID situation, as Maqsood Ali already mentioned, it doesn't matter where your employee is working. So whether my employee is working in Sacramento, Los Angeles, New York, or Islamabad, or Karachi, it doesn't matter. I mean, Sobia Ali is an example right now in this panel. She's working from Islamabad for Safir Pakistan. So by moving our back office operations, we can immediately reduce our cost structures for businesses here, yet create high quality, good jobs in Pakistan. So that's point number two. Last comment, and I'm going to be very brief, is what is my favorite, and that's something which I, as an individual, is doing it myself. Last year, I went to Pakistan, I spent time, and I went to all the major universities. I visited, met with professors, met with students. I spent time with students. I hung around with them, I asked them, I talked to them, what are they thinking, what are their dreams, what are their ambitions? And I found such a huge thirst. These youngsters are hungry for direction. These youngsters are hungry to do something big, to do something, and this unharnessed youth and energy is what we can tap into. So personally, I'm participating on my own individual capacity and working with these youth on a lot of startups. I'm part of Open, as already Open has been introduced. And as an individual, I go talk to these startups, and whether I can help them guide with experience, or I can give them a little bit of money to solve their problems. But this is where we can make a huge difference. Let's go tap into the youth of Pakistan. There's young engineers coming out from NAML, from NUST, from UET, from NED, and they're looking for jobs. Every place I went, they said, "Sir, ye mera resume hai, mujhe kahin aap introduce kar dein, job de dein." And I'm looking at them and I said, "Yeah, why don't you three of you engineers get together and start this little business here? And not only that you will create a job for yourself, but you will create jobs for others." Makes sense. I was at NUST, and there was this young girl. She was in marketing. There was an engineer. He just finished electrical engineering. He was in the final year, and they had one finance person. And I told them, "Look, guys, you're looking for a job. Three of you standing there to me looks like a company.
You got a marketing person, you got a finance person, you got an engineer. Why don't you come up with some basic, simple idea and start a little company? And so this is where I think we can create and make a huge difference by supporting startups, by encouraging the culture of entrepreneurship. By just giving jobs, how do you give jobs? No, you start companies, and companies give jobs. Yeah, thank you very much, Mr. Nasir. कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी की मदद करें। कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स ग्रुप लॉस एंजलिस आपकी खिदमत के लिए मुतहरिक और तैयार। अगर आपको कोरोना वायरस की इलामत है या उसमें मुब्तला है तो मदद के लिए पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टास्क फोर्स से फौरी इस नंबर पर 310-424-3686 पर रब्ता करें या इस वेबसाइट पर रुजू करें। शुक्रिया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा जानते हैं कि मैंने तादाद प्रोग्राम और इंटरव्यूज़ किए हैं साल से और अब मैं ला रहा हूँ एक बुक द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी अमेरिकन इन अमेरिका। ये बुक जो है तकरीबन 500 पेज पे मुश्तमिल है और इंशाअल्लाह दिसंबर में इसको मैं रिलीज़ कर रहा हूँ बुक को। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी शख्सियत है आप चाहते हैं कि उसको इस बुक में शामिल किया जाए तो प्लीज़ मुझसे रब्ता कायम करें। मेरा ईमेल लिख रहे हैं, मेरा फ़ोन नंबर लिख रहे हैं। प्लीज़ डोंट मिस माई बुक इज़ कॉल्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी अमेरिकन इन US. Okay, the book is remarkable, very informative about those successful Pakistani American, those gone on the height of success. So please stay tuned with my book coming soon on December. Or if you know someone to be participate in this book or included in this book, please contact me on this number और ये मेरा फ़ोन नंबर है। Naveed, the scientist and pharmacist, and he has the startup companies. Yes, go ahead. Naveed, go ahead, sir. Assalamu alaikum. Thanks for arranging this and participating in this. I want to share 2 points. The one is work in progress, and the one is a proposal for something which has a huge potential in Pakistan. The first part is the work in progress, that we have started a geriatric care company here in Silicon Valley, and we have developed 3 platforms, a geriatric care specialized pharmacy, a PBM, and a hospice agency. For all those operations, which are very in their own right, they are very complicated operations, require a lot of skill sets. We conceived a model which I concur with what Nasir Javed and Maqsood Ali said about the outsourcing and back office. We set up an operation in Islamabad, and we have a very successful results thus far. That some of the work which can be outsourced, which can be done outside of the decision care privilege requirements over here, that can be given to very highly skilled people. They can be trained and they do a wonderful job. So there is a huge potential, and that can expand to build a workforce which is capable of delivering in a lot of industries in a very, very meaningful way in terms of not only the contribution, but also in terms of the revenue. The second point I want to share with you is based on my previous experience in drug research. Drug research is a huge market, and I consider this, other than being potential for the revenue and anything else, it is a matter of national security. We unfortunately are not at the level that if we ever have to operate under circumstances like this COVID, where it is isolated the nations, it isolated the regions. If any such thing happens, we are not fully prepared to address situations like that. But besides that, there is a huge potential. We have the infrastructure, we have the work skill set. It just needs to be trained, retuned, and it can do a huge contribution in terms of the national interest matters. And the job creation. And also a lot of job creation. And it's a huge opportunity for revenue as well. One of the areas is small molecule drug discovery. The market is $48 billion.
And to put everything I said in perspective, I want to share one example. When I was in drug research, I had an option to hire a medicinal chemist here in US, which costs about $300,000, the salary, benefits, and the operational infrastructure. And I had an option to hire a similar skill set with some added benefits in India for only $6,000 a month. And I did. The company I started working with had less than 25 chemists to contract out. In a time frame of about 18 months, they increased their workforce from less than 25 to more than 600. You can imagine the potential and the growth, and that is still there. And this is something which is not saturated at the moment. It is not going to saturate in any time soon. And there's a huge potential. And we are, there are a lot of us here in Silicon Valley, which are very well connected with the pharmaceutical research here, and we can establish the links. So if anybody is interested in establishing such concern, I myself, my plate is full. I'm doing a lot of things, cannot start any such thing, but if I would love to, if I have a time. But if anybody is interested, I'll be more than happy to help to talk more offline. Thank you. Thank you so much, Naveed bhai. To invite Subia is our news controller, run OPTV operation in Pakistan. As you know, the OPTV Global is created to provide services to the overseas Pakistani all over the world. This is the only channel to an advocate for the overseas Pakistani issues, problems, trade, investment, promotion, everything. Because there is no channel in Pakistan providing this kind of a promotion and services. They are not talking about the project. They're not talking about the Pakistan soft image. They're not highlighting the role of the Pakistanis all over the world, their contribution in politics, business, trade, technology, and science. So these are one and only channel is called OPTV Global, which is on the web stream and electronic boxes. And we created one program. It's called Rebrand Pakistan. Okay, the Rebrand Pakistan conducting interviews, lot of successful Pakistani in Pakistan, how to rebrand, how to export your product in all over the world. So, Subia, please give your brief review. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब लोगों ने बड़ी एक हेल्दी डिस्कशन की, एक बड़ी पॉजिटिव बात की, जो कि आई थिंक इस वक्त नीड ऑफ टाइम है. हमें बहुत ज़रूरत है कि हम इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करें, और वो भी एक ऐसे सिचुएशन के अंदर कि जब एक बड़ा डिप्रेशन ओवरऑल चल रहा है, कोरोना की वजह से भी इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड. तो वकार अली खान साहब को, जमाल खाजा, आप सब लोगों का एक बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगी. और नासिर जावेद साहब, अभी आपने एक बात की, मैं आपकी इस बात को यहाँ पे इस तरह लेके जाना चाहूँगी कि कराची के अंदर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, और यहाँ पे जो वो लोग इसके लिए जो उन्होंने बड़ा एक अच्छा क्राइटेरिया रखा है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी डिग्री याफ्ता हो, आपका प्रॉपर एक एजुकेशन आप उससे चल के हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टअप्स के लिए आपको इंकरेज किया जाता है. ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री है, उसके अंडर, उसके बैनर तले चलता है. इसके हमारी बड़ी अच्छी इसकी मिसाल हैं बाइकिया, हुक्म जनाब, और हमारे ये बड़े यंग जो बच्चे हैं वो इन सारे बड़े स्टार्टअप्स को बड़े एक हेल्दी उसके अंदर लेकर चल रहे हैं. लेकिन आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानीज हैं, जो ओवरसीज़ हैं, कि बिल्कुल आप लोग भी आगे बढ़ें, और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी नई नस्ल है, उन लोगों के लिए आप लोग भी सरमायाकारी करें, देखें कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ज़रिए आप हमारे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं, जब हम मास्टर्स करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं, तो ऑब्वियसली जो आपने स्टडीज़ में पढ़ा होता है, जो अपनी डिग्री में पढ़ा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है वो उससे इंटायरली डिफरेंट होती है, और आपको लग पता जाता है कि आपके साथ क्या हुआ है. यू सी, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल में हमें वक्तन फ़वक्तन इस तरह की डिस्कशंस रखनी चाहिए, बात करनी चाहिए, और ऑब्वियसली बात करेंगे तो फिर हल भी निकलेगा. थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सब लोगों का. और मेरे ख्याल में अब हमने काफ़ी टाइम ले लिया है, हम एंड की तरफ चलते हैं. In the end, Jamal Khwaja साहब, with the closing point, this is Mr. Atif Aziz साहब, और जब्बार साहब अगर मौजूद हैं, तो मेरा कहना यह है कि रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंटिंग की
जितनी भी प्रोग्रेस और प्रमोशन हो रही है वो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, हालांकि उनको उसकी जरूरत नहीं है. पाकिस्तान में कोई भी रोशन पाकिस्तान में अकाउंट खोल नहीं सकता. ये सारे अकाउंट जो है ओवरसीज पाकिस्तानी खोलेंगे, चाहे जापान में हो, कोरिया, चाइना, लैटिनो कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, अमेरिका. लेकिन यहाँ की किसी भी मीडिया में उसकी कोई प्रमोशन है ही नहीं. यहाँ के लोकल प्रिंट मीडिया या यूके का हो, लंदन का हो, कोरिया का हो, जापान का हो, या यहाँ के टेलीविजन हो, यहाँ का सोशल मीडिया हो, उसमें गवर्नमेंट ने आंखें बंद करके रखी हुई हैं और उन्होंने देखना भाई ये तो प्रोजेक्ट यहाँ का है, इसको यहाँ पर प्रमोट करना चाहिए. पाकिस्तान के किसी दूर दराज के चैनल में उसको ऐड देने की जरूरत क्या है और उसको प्रमोट करने की जरूरत क्या है? अगर आपने रोशन पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस कराना है तो आप बाहर आए हो. बाहर के जो सोशल मीडिया के चैनल है, कोई भी चैनल हो, आई एम नॉट टॉकिंग द ओपीटीवी ग्लोबल, एनी चैनल जो ओवरसीज में रन कर रहे हैं, यूके में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में या चाइना में या लैटिनो कंट्रीज में, कहीं भी जो प्रिंट अखबार निकल रहे हैं, ठीक है, अब वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं. तो उनको चाहिए कि रोशन डिजिटल पाकिस्तान को ये चीज प्रमोट करना चाहिए. और यही वजह थी कि इलेक्शन में वोटिंग बहुत कम रही, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के चैनल में प्रमोट कर रहे हैं कि वोट दो ओवरसीज पाकिस्तानी. ओवरसीज पाकिस्तानी तो यहाँ है, यहाँ से आपको अपनी एडवर्टाइजिंग और प्रिंटिंग और मार्केटिंग करनी चाहिए. और यही मैं जनाब जैस बैंक के सीईओ मौजूद है यहाँ पे, या ये 5 बैंक जो है, दे शुड एडवर्टाइज इन ओवरसीज पाकिस्तानीज, नॉट इन पाकिस्तान. जी, और वकार भाई मैं एक और बात ऐड करता चलूं. आई वाज शॉक्ड टू नो, लिटरली शॉक्ड टू नो, जब हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आए और उन्होंने बताया कि 8 ऐसी कंपनियां हैं जिसके थ्रू आप अमेरिका से पाकिस्तान पैसे भिजवा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, और इसके बारे में किसी को नहीं मालूम, कम से कम मुझे तो नहीं मालूम. तो मैं जमाल ख्वाजा साहब थोड़ी सी इंटरवेंशन करूंगा. वकार खान साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है, और इसकी इंफॉर्मेशन की जितनी डिसेमिनेशन हो वो कम हो, लेकिन क्योंकि इस इनिशिएटिव को अनाउंस हुए ही कोई हफ्ता या कोई 10 दिन हुए हैं, और इस दौरान आपने खुद देखा कि हमारे एम्बेसडर ने एम्बेसी के प्लेटफॉर्म से स्टेट बैंक के गवर्नर और पूरी टीम को ले आया, और आपने देखा कि वो लाइव फेसबुक पे हजारों लोगों ने अक्रॉस अमेरिका प्रोग्राम देखा. फिर सब्सिक्वेंटली हमने अपने ऑफिशियल फेसबुक पे और अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पे सारी कॉन्सुलेट्स ने, एम्बेसी ने इनके जो इस अकाउंटिंग के जो डिटेल्स हैं वो लगाए हुए हैं लोगों के बेनिफिट के लिए. फिर सब्सिक्वेंटली मैं बताऊं कि 30 जो सितंबर को हमने एक वेबिनार अरेंज किया है, जिसमें हमने बैंक ऑफ पंजाब, फैसल बैंक को, यूबीएल को, हबीब बैंक को, इनके जो रिटेल बैंकिंग के हेड्स हैं उनको बुलाया है, और उसमें तकरीरें नहीं होगी, उसमें सिर्फ लोग सवाल पूछेंगे, अपनी क्वेरीज होंगे, कंसर्न्स होंगे, एंड दोज विल बी डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय दोज हेड्स ऑफ द रिटेल बैंकिंग के. फिर उनको हमने ये भी कहना है उस दौरान इंशाल्लाह कि ये सारे लोग अपना फोकल पर्सन नॉमिनेट करें बैंकों में, और हमसे वो एक नंबर भी जो है हमसे शेयर करें, जो वाइडली डिसेमिनेट करेंगे अपनी जुरिसडिक्शन में अक्रॉस वेस्ट को, कि जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो रीच आउट करें. तो मैं एग्री करता हूं पार्टली वकार खान साहब से और आपसे भी कि ये उस तरह से फुल फ्लेज डिसेमिनेशन नहीं हुई है इंफॉर्मेशन की, लेकिन अभी ये बहुत ही 10 दिन पहले तो ये इनिशिएटिव अनाउंस हुआ है, तो इट मे टेक अ लिटिल मोर टाइम, but we will definitely widely disseminate, and we will ensure that every Pakistani American based across West Coast be reachable and accessible to us and the people in Pakistan in banking sector, where they can get their all queries addressed well in time, inshallah. थैंक यू सर. वकार भाई मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि शोएब सरवर साहब भी अब लाइन पे, अगर 1 मिनट उनको दे दिया जाए. बिल्कुल भाई, शोएब सरवर के बगैर कैसे ये सेमिनार क्लोज हो सकता है? वो तो सेमिनार के गुरु हैं, उन्होंने तो हमें सिखाया है. द फ्लोर इज योर्स सर. अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर. अच्छा, मैं सबसे पहले तो जी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इनिशिएटिव पे, और आई होप के लोगों ने जो ये आपका इनिशिएटिव है इसको यूजफुल पाया होगा. तो मैं पहले भी मौजूद था, मैंने काउंसिल जनरल साहब की तकरीर भी सुनी, फिर मैं लॉग आउट कर गया था, मैंने दोबारा जूम इन किया. अच्छा, ये इसके बारे में ये जो अभी ये सीधी साहब बात कर रहे थे रोशन पाकिस्तान इनिशिएटिव, देखें ये तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये अभी ये 8-10 दिन पहले तो लॉन्च हुआ है. एज फार एज पब्लिसिटी इज कंसर्न, इन दी एंड तो देखें ये बैंकों का काम है, और वो करेंगे वो इसलिए कि उनको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है इसमें. और बैंक्स जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो किसी हद
وہ جہاں ان کو ایک اپنا فائنینشیل انسینٹو نظر آئے, اور اس میں نہ صرف فائنینشیل انسینٹو ہے بلکہ بینکوں میں آپس میں کافی کمپٹیشن بھی ہوگا کہ وہ پاکستان اوورسیز پاکستانیز کو انٹائز کریں کہ جی وہ ان کے ساتھ سروسز کریں. کیونکہ صاف بات ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ایک بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہیں, اور یہ جو اس قسم کی پہلا اپرچونٹی ہے, جتنی فیسیلیٹیشن ہے, اور میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ایک آدھ سال میں یو ول سی یہ کہ جی کہ یہ بلینز میں سم ہوگا جو پاکستان اس روٹ کے تھرو جائے گا. سر پھر بھائی یہاں پہ ایک سوال اگر آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں, بیکاز آئی واز آلسو شاک کاٹ بائی سرپرائز کہ ایسی کمپنیز ہیں یو ایس میں جو پاکستانیوں کو فری پیسہ ٹرانسفر کرنے دیتی ہیں پاکستان, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے سر؟ دیکھیں یہ جو ہمارا ویبینار ہے اس پہ ہم بات کریں گے, اس کے بارے میں میں یہ سوال کروں گا. بیسیکلی یہ جو بینکس ہیں انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں, کچھ ہر بینک نے مختلف کمپنی سے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں. جو امریکہ میں منی چینجنگ ہے کہ بیسک اس کا پرپز تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو اسمال اماؤنٹ جو بھیجنا چاہتے ہیں وہ ان کو چارجز نہ پڑے, وہ ڈسکریج نہ ہوں. جو اگر آپ نے لارج اماؤنٹ بھیجنا ہے تو وہ تو عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بینک ٹو بینک بھیجیں, اپنے اکاؤنٹ سے وہاں اکاؤنٹ میں بھیجیں, تو وہ زیادہ لاجیکل چیز ہوتی ہے. لیکن یہ جو سوال ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ جو بینکس والے ہیں ہم نے دیکھے جو پاکستان میں جو ریمیٹنسز کے حساب سے سب سے بڑا بینک ایچ بی ایل ہے, اس کے بعد جو بزنس والیوم ہے وہ یو بی ایل کے پاس سیکنڈ نمبر پہ ہے, لیکن ریمیٹنسز کے حساب سے سیکنڈ نمبر پہ ایم سی بی ہے. اچھا, اور پھر اس کے بعد آپ کے یہ بینک آف پنجاب آتا ہے. تو پہلے جو 4 بڑے بینک ہیں ان ٹرمز آف بزنس والیوم, وہ 3 تو کے تو ریپس وہاں موجود ہوں گے. اور اس کے علاوہ فیصل بینک بھی ہے جو کہ ایک فورن بینک ہے, لیکن اس میں ان کی کوالٹی آف سروس ذرا بہتر ہے. تو جو ذرا پاکستانی جو ہائی اینڈ بینکنگ چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ جی ان کو زیادہ کوالٹی سروس ہے, ان کے بھی ریپ ادھر موجود ہیں. تو ہم تو آئندہ, بلکہ یہ ایک پہلا سیشن ہے اور ہم تو اس پہ بھی آگے تیار ہیں کہ کوئی بینکس اگر کوئی چاہتے ہیں ہمارا پلیٹ فارم استعمال کرنا تو ہم ان کے ساتھ 1-to-1 سیشن بھی کر سکتے ہیں, واٹ ایور اٹ ٹیکس. بٹ اس میں یہ ضروری ہے کہ بینکس کی طرف سے انیشیٹو ذرا آنا چاہیے, اور ان کو اور یہ دیکھیں اس ویبینار کا جو ایک پرپز نہ صرف آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے, دوسرا اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دوسرے بینکس کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بھی دیکھیں اور ان پہ بھی پریشر پڑے کہ یہ جو مطلب جو دوسرے بینک سے کام کر رہے ہیں, یہ بھی ایک سٹل میسج کا ایک طریقہ کار ہو. تو میرے ذہن میں جب یہ بات تھی تو یہ بھی, اور اس کا رسپانس امیڈیٹلی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے فیصل بینک کو ہم نے ریچ آؤٹ نہیں کیا تھا, لیکن ان کے کسی ریپ نے وہ وہاں دیکھا اور وہ کاؤنسل جنرل کو رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بھی اس میں ڈال لیں, تو ہم نے ان کو بھی ڈال دیا. تو آگے بھی اگر کوئی بینکس جو ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں جو سمجھتے ہیں کہ بزنس پوٹینشیل ہے, جو کہ ہے بہت زیادہ, کیونکہ اس دفعہ اس میں جو ریٹ آف ریٹرن ہے, جو مثال کے طور پہ اگر آپ 5 ایئر بانڈ گورنمنٹ کا بائی کرتے ہیں ڈالر ڈینومینیٹڈ, تو 7% انٹرسٹ ریٹ جو ہے ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے. ہیوج سر, ہیوج. جمال صاحب, خواجہ صاحب, آپ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے اگر کسی پاکستانی کے پاس امریکہ میں فری ہولڈ پراپرٹی ہے $1 ملین کی, اور وہ آج کل یہاں انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ مطلب لو ہے, اور وہ اگر 2.5% پہ بھی فکس کراتا ہے اپنا ری فائنینس کرا کے, اور اسی پیسے کو آپ یہ گورنمنٹ بانڈز میں آپ انویسٹ کریں پاکستان کے ڈالر ڈینومینیٹڈ, تو آپ 4-4.5% کا آپ کو اسپریڈ ہے. زبردست سر. اور یہ تو سر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ سی ڈی اکاؤنٹس میں اگر 1% انٹرسٹ ملتا ہے آپ کو, 1 بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا سی ڈی اکاؤنٹس میں یہاں پہ سر آپ کو 0.87 بھی ریٹرن نہیں آ رہا پر اینم. یہ تو بہت زبردست قسم کی اپرچونٹی ہے. اور میں بھی آپ کو یہ دیکھ رہا تھا کہ جو فیڈ ہے, یہ بھی وال اسٹریٹ جرنل میں 2-3 دن پہلے کے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2023 تک انٹرسٹ ریٹس کو یو ایس میں کوئی ٹچ نہیں کریں گے پروبلی. یہ سر انڈر زیرو جا رہے ہیں اس وقت, جو اوور نائٹ بینکنگ چارجز ہیں وہ زیرو ہو گئے. جو بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں جو کہ اسمارٹلی اپنے پیسہ مینج کرنے کا سمجھتی ہیں, تو یہ بڑا ہی زیادہ رسک فری کام ہے, کیونکہ واحد رسک جو ہے وہ سوورن رسک ہے پاکستان کا. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے آج تک کبھی اپنی سوورن گارنٹی پہ ڈیفالٹ نہیں کیا. یہ بھی اس حساب سے سپریڈ بہت بڑا سپریڈ ہے.
लेकिन मैं यहाँ पे जरूर आपसे एक बात कहूंगा सर कि जो दोनों लोग आपने डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक और गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। अच्छा काम किया। मैं क्योंकि फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। एंड आई थिंक वकार साहब का भी यही लुभाव था कि जी इसको थोड़ा सा और फैलाया जाए। और सर ये सिर्फ पाकिस्तानियों की मदद नहीं कर रहा, ये एक पाकिस्तान को इम्प्रेशन दे रहा है। जब एक नॉर्मल मीडियम पे एक नॉन पाकिस्तानी इस बात को सुनता है, पढ़ता है कि जी पाकिस्तान में इतनी चीजें चेंज हो रही हैं, आप यहाँ से बैठे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, इट गिव्स अ अपलिफ्ट टू द कंट्री। आई थिंक जमाल साहब बहुत ही अच्छी डेलिब्रेशन, और ऑफ कोर्स मिस्टर शोएब सरवर द गुरु है वेबिनार के, एंड यू नो हाउ टू कंडक्ट। अब्दुल जब्बार साहब ने माशाल्लाह पूरा बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छी वाइब्रेंट तरीके से और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इन द एंड विल गो टू द मिस्टर आतिफ अजीज साहब, जो हमारे कोलैबोरेटर हैं, जिनसे आपने कोलैबोरेशन करके ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो सारे पार्टिसिपेंट हैं, जब्बार साहब और सरवर साहब, अतीफ साहब, आपको पसंद आए होंगे। वो अपना कीमती टाइम निकाल कर आए। ये ऑल सीओज हैं और आज संडे का दिन है, फैमिली भी होती है। तो आतिफ अजीज साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी। सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनके सजेशन सारा नोट डाउन किया है सर। और जो टेक आउट है सर, जो बॉटम लाइन यही है कि जो फर्दर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उसकी फर्दर हम फैसिलिटेशन, जो कॉस्टिंग है हमारी या रेड टेपिज्म जिसको सो कॉल्ड हम कहते हैं, उसको फर्दर हम रिड्यूस करें, बॉटलनेक्स को खत्म करें। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नासिर साहब ने भी फरमाया कि जी बैक ऑफिस सपोर्ट, पाकिस्तान में जो एक्सपेट्रिएट्स काम जाते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक फ्रॉम दिस इम्पॉर्टेंट वेबिनार कि जी आप लोग जो पाकिस्तान का सरमाया, कीमती सरमाया है, अगर आप लोग ये अपने मुल्क पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स हु कैन कम इन पाकिस्तान। सो विद दिस क्लोजिंग रिमार्क्स, थैंक यू वकार साहब एंड जमाल ख्वाजा साहब। जब्बार साहब चले गए हैं। जब्बार साहब जी मैं हूँ जब्बार साहब, आपने जैसे चाहिए होगी, ओवरऑल आपको आज की मीटिंग कैसी लगी? खान साहब माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपको, आपकी टीम को, जमाल ख्वाजा साहब को, जिन लोगों ने सारा ये काम किया है, पाकिस्तान से भी आपकी टीम ने। और मैं स्पेशली मशकूर हूँ कि आपने मुझे अक्रॉस यूएसए के चंद बहुत ही चीदा लोगों से भी आपने मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया। और इंशाल्लाह ताला ये हम मिलके काम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये सारे इश्यूज जो है और पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला हम और ऊपर ले जाएंगे, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए और भी जिस किस्म की एफर्ट की जरूरत पड़ी हम मिलके करेंगे इंशाल्लाह ताला। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। जमाल साहब सर, मैं बस यही कहूंगा कि द प्रोग्राम इटसेल्फ स्पीक्स फॉर इट, कि हमने सोचा था 1 घंटे 20 मिनट तक लोगों को एंगेज रखेंगे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से 2 घंटे हो रहे हैं। और खास तौर पे सुहेल मसूद जैसे, जब्बार साहब जैसे, जिनका हम जितना शुक्रिया करें कम है। आई एम सो थैंकफुल। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने 2016 में फैक्ट्री लगाई पाकिस्तान के अंदर, और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने कोई नहीं बताया कि मैं फलाने चौधरी का बेटा हूँ या फलाने वडेरे का बेटा हूँ। मुझे ना बिजली ना पानी, मुझे किसी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। So anyway, thank you very much, Mr. Abdul Jabbar Saab, His Excellency, the Consul General of Pakistan, Atif Aziz Saab, और शेख सरवर साहब, और मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम participant. Now we created this bridge group, and we will add on more people in it, and we'll talk each other on the WhatsApp and what we need, what are the issues, and who is the investor who's planning. And Sayyid Saab ka jo ye idea hai to take the delegation, that was really my ideas long time ago, to take some entrepreneur, businessman to Pakistan to talk eye to eye with the Prime Minister of Pakistan, Department of Commerce, and other areas, and see the location, see the industry. Really, Pakistan is thriving, mashallah, and such a diplomat like Mr. Abdul Jabbar Memon और आतिफ अजीज साहब, सरवर साहब, अगर ऐसे आते रहे लोग तो इंशाल्लाह ये वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन होगा और प्रोग्रेस करेगा। थैंक यू वेरी मच जमाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑर्डिनेशन। Subia, you deserve a lot of salute, because you're working since 1 month coordinating all these things. And once again, thank you very much. God bless Pakistan and God bless America.
नाज़रीन, तो आप देख रहे थे TV1 पर प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे और इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट वेबिनार। मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे देखते रहिए और हम आपके लिए अच्छे प्रोग्राम लाते रहेंगे। इसके साथ ही आपका मेज़बान वकील ख़ान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।